Now remember, it is Tunisha's mother who out and out blames Sheezan for what led to her daughter's end and why she decided to commit suicide. But it is Sheezan putting forth another theory. To give you details of what is being said on both sides, Tunisha's mother says that Sheezan was in a relationship with other girls and that he was cheating on Tunisha. He was never serious about the relationship and he always dodged her daughter, I beg your pardon. But also on the other hand, it is Sheezan saying that there was a 7-year age difference between the two and there were religious differences. That is why he went on to break up with Tunisha. He had broken up with Tunisha just 15 days before she actually committed suicide, and Sheezan also claims that he had informed Tunisha's mother about how she had attempted suicide once even earlier, and he had told her that this is what her daughter had attempted and the family should have paid more attention. But it is really now this contradiction that the police is looking into, where Tunisha blames Sheezan for what happened to her daughter, but Sheezan says that there were other differences that led to the breakup. Remember, Tunisha was all of 20 years of age. Sheezan was 27 years of age. Tunisha's mother also says that Sheezan should have shown better sense and he should not have misled her daughter like this. But Sheezan says that that was the very reason why he broke up with her. Sandeep, who tracks all the details on the ground, is live with us on the broadcast. Sandeep, now the latest, of course, coming in as the police is trying to solve that 15-minute mystery. What transpired between 3 p.m. and 3:15 p.m. They are also looking at details of what Tunisha was wearing on that day. Those clothes have gone into forensics. If there were any blood stains of any last traces, mobile phones of both Tunisha and Sheezan that are being checked by the team. So yes, Falak Naz, the sister of Sheezan, have in fact arrived out here at the Valib police station. But yes, as you rightly mentioned, the ornaments that Tunisha was wearing at that point of time has been in fact taken, and apart from that, blood stains on her body was also there. And the dresses that she was wearing, that has also been sent for forensic examination at Kalina. In fact, the sister has in fact arrived here. Most likely that she is here to meet Sheezan. But at this point of time, what we are getting to know that police officials are not allowing her to meet, not allowing her to meet Sheezan, and in fact we are showing you the visuals. Pan the camera, Bukut, if you could just pan the camera. So Sheezan's sister is right inside there, and we are trying to in fact get some visuals for you. But yes, Falak Naz is here to meet his brother Sheezan, and in fact police officials are not in fact allowing her to meet Sheezan. Remember, this is very important case, and at this point of time, remember what happened yesterday. The Maharashtra Minister Girish Mahajan had already given a statement in regards of possibly that it could be a love jihad angle, and police is also interrogating these angles as well, whether it is any kind of love jihad or not, but so far it hasn't appeared as same. But yes, the officials are out here and they will in fact interrogate Sheezan Khan. All right, so those are live pictures coming in as Sandeep gives us details of Sheezan's family that is now at the police station where they are being interrogated. Remember, this is extremely important because Sheezan's family will now put forth all that they know, and they are being questioned in connection with what really was the relationship like between Sheezan and Tunisha, and how much were they aware of. So these are pictures coming in from the Valib police station where Sheezan's sister is claiming that she is wanting to meet her brother, but the police is now not permitting that.
They're not granting her permission to meet with her brother. But Sheezan's family now at the police station, where they will be questioned on what they knew about the relationship and whether these allegations made by Tunisha's mother of how much they are aware or whether they are in agreement with. But this is the breaking development that is just coming in, where Sheezan's family is at this police station. They are being questioned by the cops. This as Tunisha's mother continues to claim and blame Sheezan for her daughter's suicide. She said that Sheezan was with other girls. He was cheating on Tunisha. He used to torture Tunisha. He was always misleading Tunisha. She was a young girl, all of 20 years of age. Everything was going well for her. She had a bright career ahead. She had been a child artist. She had been working since a very young age. But it was Sheezan who had misled her daughter. So that is the version of Tunisha's mother. Sandeep, I want to come to you as we stay with these pictures. Sheezan's family at the police station, they are being questioned, but no permission to Sheezan's sister for her to meet the brother. See, yes, remember the court has in fact granted the permission. Court has granted permission to, you know, for home food and medicines. But at this point of time, the family members wanted to meet Sheezan, but they are not in fact allowed out here to meet them. And for the same reason, they are here to make a request to allow them to meet. But at this point of time, they are not being allowed out here to meet, and we are in fact showing you the exclusive visuals of the family members. सामने से देख रहा है देखो Walev police station. They are here at Walev police station, and in fact they are seeking permission. They are seeking permission to in fact meet Sheezan Khan. So the family members of Sheezan Khan are here at Walev police station. Remember what has happened in the past as well. Remember the police is trying to investigate Sheezan Khan's, the mobile phone, and the electronic evidence has been in fact seized, and the ornaments of Tunisha Sharma has in fact been sent for forensic examination. But at this point of time, police is also police will be जी देखिए इस वक्त जो है वो यहाँ पर शेज़ान खान के परिवार वाले जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और शेज़ान खान से मिलने की अनुमति जो है वो मांगी जा रही है। इस वक्त पुलिस दफ्तर में, पुलिस स्टेशन में जो है उनके परिवार के लोग पहुँचे हैं, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या शेज़ान खान के परिवार वालों को शेज़ान से मिलने का मौका दिया जाता है या नहीं। आपको याद दिला दें कि कोर्ट में इस बात को लेकर के जो है चर्चा हुई थी और कोर्ट में केवल खाने और घर के खाने और केवल दवाइयों को लेकर के जो है वो अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर उसके घर वाले पहुँचे हुए हैं, लिखा पढ़ी हो रही है, संभावित है कुछ कानूनी दस्तावेज़ होंगे जिसको लेकर के अभी जो है वो लिखा पढ़ी चल रही है इस वालेव पुलिस स्टेशन में। आपको बता दें कि जाँच की अगर बात करें, जांच में एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड का भी पता चला है जिसे शेज़ान खान एक ही वक्त में डेट कर रहा था और उस लड़की से भी जो है वो संपर्क साधने का प्रयास पुलिस कर रही है और उसका बयान भी काफ़ी अहम होगा। और इस वक्त जो है पुलिस ने जो है उस अली बाबा के सेट पर पे भी जो है वहाँ पर भी जा कर के वहाँ की दोबारा से इंस्पेक्शन की है, जहाँ पर जिस प्रकार से स्टेन्स मिले थे बॉडी में ब्लड स्टेन्स मिले थे, खून के ब्लड स्टेन्स मिले थे, जिसके बाद जो है वो पुलिस ये जांच करने गई है कि क्या वहाँ पर खून के निशान हैं, क्या उस सेट पर खून के निशान हैं। तमाम उन चीज़ों भाई के ऊपर जो आरोप लगे उसको लेकर कुछ बताइए। क्या कहेंगी मैम, कुछ कहेंगी? आपके भाई के ऊपर जिस तरह का आरोप है सुसाइड का, एलिगेशंस लगे हैं, आप क्या बात कहना चाहोगे?
रुको उधर अंदर मत आओ, अरे इधर मत आओ, चलो। देखिए, अभी परिवार वाले तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमने प्रयास किया, तमाम मीडिया जो यहाँ पर मौजूद था उन सब ने प्रयास किया था कि फलक नाज जो शीज़ान की बहन है वो कुछ बोलें, कुछ कहें, अपना पक्ष रखें। आपको याद होगा कि पिछले 2 दिनों से तुनिशा के परिवार वालों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट जो है वो फलक नाज या शीज़ान के परिवार के तरफ से नहीं आया है। और यही कारण है कि मीडिया लगातार उनसे सवाल पूछ रही थी कि वो उनका पक्ष रखे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति शीज़ान खान के परिवार से सामने आकर के शीज़ान के समर्थन में जो है या कि शीज़ान के पक्ष में किसी भी प्रकार की बातें जो है वो नहीं कही गई है। यहाँ पर देखिए कि तमाम जो दस्तावेज़ हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस वालों के हाथ में एक मोबाइल सौंपी भी गई है। ये मेरा ख्याल है पुलिस वालों के ही मोबाइल है, लेकिन हाँ, इस वक्त जो है लिखा पढ़ी जो है वो हो रही है यहाँ पर। और लिखा पढ़ी के दौरान जो है हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही फलक नाज जो है वो बाहर निकलेंगी वैसे ही हम प्रयास करेंगे कि उनसे सवाल पूछा जाए। लेकिन हाँ, इस वक्त शीज़ान का परिवार यहीं पर मौजूद है। कागज़ी दस्तावेज़ जो हैं, कानूनी कागज़ हैं, वो यहाँ पर सौंपे जा रहे हैं पुलिस वालों को। देखने वाली बात ये है कि क्या फलक नाज या उनके परिवार वालों के फ़ोन को भी ज़ब्त किया गया है या नहीं किया गया। ये देखिए, अगर दृश्यों में देखेंगे तो फलक नाज जो हैं वो अपने फ़ोन में कुछ करती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, मोबाइल जो है, मोबाइल पुलिस वालों को सौंपा गया है। पुलिस वालों को जो है वो फलक नाज द्वारा जो है, परिवार वालों के द्वारा जो है मोबाइल सौंप दिया गया है पुलिस को। और ये साफ दृश्यों में आप देख पाएंगे। अगर आप दृश्य देखेंगे तो साफ दिखेगा कि जो शीज़ान के परिवार वाले थे, उनकी बहन थी, उनके पास से मोबाइल जो है पुलिस वालों को जो है वो सौंप दिया गया है। अभी कोशिश करेंगे कि कुछ बात हो जाए, उनका पक्ष लिया जाए। आखिर मैडम, आपने अपना मोबाइल सौंपा है पुलिस वालों को, कारण क्या है? तो अभी जो है अभी जो है वो जो है फलक नाज जो हैं, शीज़ान की बहन जो है वो अभी भी अंदर है और उन कागज़ी कार्रवाई जो है वो चल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या फलक नाज को अनुमति दी जाती है उनके परिवार वालों से मिलने के लिए। और क्या अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, कि शीज़ान की बहनों का अभी फ़ोन जो है वो ज़ब्त किया गया है या नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक आधिकारिक पुष्टि जो है पुलिस वालों की तरफ से की जाए। हालांकि दृश्यों में अगर आप देखें कि हम सीधे पुलिस थाने से आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। रिपब्लिक की टीम जो है वो यहीं पर है और हम लाइव दृश्य जो है वो दिखा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात की जाए, कोशिश करेंगे कि उनसे बात की जाए। और आपको बता दें कि ये ऐसा मामला है इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री में, तुनिशा शर्मा महज 20 साल उम्र और प्यार में धोखा खाने के कारण जो है तुनिशा ने जो है आत्महत्या कर ली। इस प्रकार की बातें जो है वो सामने आई है। इन्वेस्टिगेशन में एक महिला मित्र जो शीज़ान की गर्लफ्रेंड थी, सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, उससे भी पूछताछ जो है आने वाले दिनों में पुलिस करेगी। हालांकि इसकी अभी ये तय नहीं है कि उस महिला को जो है वो वालिफ पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, या किसी अज्ञात जगह पर जो है उससे पूछताछ होगी। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति ऐसी है कि फ़िलहाल उनके परिवार वाले यहीं पर हैं। फलक नाज जो उनकी बहन है वो यहीं पर हैं। और कल जो है कोर्ट में शीज़ान को पेश किया गया था और करीब 4 दिन की कस्टडी, 28 तारीख तक जो है उसकी कस्टडी जो है
पुलिस को सौंपी गई है। तमाम लोगों से पूछताछ करने का दौर जो है वो लगातार जारी है, लगातार जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक आधिकारिक स्टेटमेंट जो है वो मिल जाए। कोई स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट जो है वो मीडिया जो है वो लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट जो है परिवार वालों की तरफ से नहीं दिया गया है। हालांकि शीज़ान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, ना तो उसके परिवार वालों की तरफ से। हालांकि तुनिशा शर्मा के मामा से भी हमने बात की। किस लिए आए थे आप लोग? किस लिए आए थे बताएंगे? Excuse me. I said. यहाँ आ जाओ। चेक। तो ये फलक नाज के साथ ये भी महिला थी। हालांकि उनका परिवार अभी भी अंदर है। हम अभी भी परिवार वालों से संपर्क कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उनका रिएक्शन जो है वो ले लिया जाए। और फलक नाज जो शीज़ान की बहन है, उनके रिएक्शन के लिए हम यहाँ रुके हैं। कोशिश करेंगे कि उनकी बहन का फर्स्ट रिएक्शन जो है वो मिले। हालांकि आपको बता दें, जो मैंने अभी देखा है यहाँ पर, मैंने देखा कि कानूनी कागज़ों पर जो है वो I just saw that the family members of Sheezan and Khan are in fact have arrived out here, and they have done some signatures on some legal papers. And in fact, what I saw is that the sister of Sheezan had given the phone to some police officials, although we will be waiting for some official confirmation from the Valiv police whether they have taken the mobile phones of the family members or not. But yes, there was some give and take of mobile phones and also signatures on the legal papers of Valiv police. But yes, it will be very much crucial to see for what the family members are here. They wanted in fact to meet Sheezan, but they were not allowed to meet Sheezan. Remember, if you go through with the court's order, court has ordered home food and medicine, as well as Sheezan is going through with the asthma, and he has to take medicine. So court has in fact allowed home food and medicines for Sheezan. But at this point of time, the family members wanted to meet Sheezan. It will be crucial to see whether they are allowed to meet Sheezan or not. We are in fact giving you the live visuals from the Valiv police station, and we have been continuously trying to connect with the family members of both, be it Sheezan or Tunisha Sharma. But at this point of time, the police officials are in fact in the talks with the family members of Tunisha, and we are also trying to get their reactions. So the family members, Sheezan's sister are here, and they are at Valiv police station, and we are just looking out for one reaction of Falak Naz, the sister of Sheezan Khan. Sheezan is under the custody for 4 days. Police is investigating this matter. In fact, remember the kind of questions they were raised by Maharashtra minister as well. He also mentioned about the love jihad angle in this case. So police also interrogating Sheezan in this angle as well. But anything, in connection of love jihad has not surfaced in the investigation so far. But yes, the family members are here, and their statement will also be important. And for the same reason,
there is a possibility that the family members of Sheezan Khan, their statement is being recorded. But yes, they had signed few documents, few papers were signed out here at Walev police station, and it will be crucial to see whether they are called or they are here to meet Sheezan. Remember, court has not allowed them, but yes, what I saw that their mobile phones were also taken by Walev police station. But there is no official confirmation over their phone being confiscated. But yes, the two sisters of Sheezan Khan are here, and it will be important to see how much time it will take. Whether is it the time that they are taking? Is it that their statement is being recorded, or they are here to meet Sheezan? So definitely several cross questions will also take place as the testimonies of family members will be taken out here, and everything will be matched, whether they were aware of of Sheezan's and Tunisha's love affair. Were they aware that Sheezan had cheated Tunisha and broke up with Tunisha? So these are several questions that would be asked to the family members. But at this point of time, both the family members, be it Sheezan or Tunisha, all of them all of them are very depressed as Sheezan is behind the custody. The family members were not in fact talking to us. In fact, we also tried them yesterday as well, but at this point of time, only one side of the story, that is Tunisha's story, has been been shown, and in fact the family members also of Tunisha had spoken, but there's no voice from Sheezan's family, and no one is in fact speaking in regards to this. Also, there are several other questions that needs to be answered, and in fact on the same direction the police is also investigating. The family members of Sheezan Khan are here at Walev police station, and in fact they for what reason they are here? Are they being called here for questioning, or they are here to meet Sheezan? That is something that we are looking. तो शेज़ान के परिवार वाले यहाँ पर आ चुके हैं, और शेज़ान के परिवार वालों से क्या पुलिस पूछताछ करेगी या नहीं करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि शेज़ान का परिवार, शेज़ान खान का परिवार, जो शेज़ान की बहनें हैं, वो यहाँ पर पहुँची है। तो क्या इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है? आप अगर दृश्यों में देखेंगे, दृश्य आपको दिखाएंगे, कुछ कागज़ पे कुछ कानूनी दस्तावेज़ों पर जो है दस्तखत ली जा रही है उनकी बहनों की, और मोबाइल फ़ोन्स जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, मोबाइल फ़ोन्स जो है वो पुलिस के अधिकारियों ने अपने हाथ में लिया था। तो क्या उनके परिवार वालों के फ़ोन की भी जांच होगी? तो ये तमाम जो सवाल है उसके भी जवाब हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति जो ऐसी है कि जिस जो बहनें हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं, और निश्चित रूप से जाहिर है कि 2 दिन हो गए कस्टडी में, और आज संभावित है कि उनका भी स्टेटमेंट जो है वो लिया जाएगा। और हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि नहीं है, कोई भी पुष्टि नहीं की गई है पुलिस वालों की तरफ से कि क्या इन्हें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया है। तो ये तमाम ऐसे बातें हैं जिसका जवाब जो है वो हम पुलिस वालों से लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आप दृश्य देखेंगे, दृश्यों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उनकी बहनें जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। पुलिस तमाम उन एंगलों की छानबीन करेगी जो इस केस में एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लव जिहाद का एंगल जो है
लव जिहाद का जो एंगल है वो सामने आ रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर सवाल जो हैं वो भी उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र में मंत्रियों के द्वारा। तो क्या पुलिस को उस संबंध में कोई डिटेल मिला है, क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं बातें? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका सवाल जो है वो पुलिस है जो है वो ढूंढेगी। तो तमाम बातें हैं जिसको लेकर के जो है पुलिस जवाब ढूंढेगी और देखने वाली बात होगी कि पुलिस को क्या मिलता है, क्या इस मामले में आगे जांच में क्या सामने आता है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के अभी भी संशय जो है वो अभी भी हैं। और आपको बता दें आज तुनिशा के परिवार वालों को भी बुलाया गया था, लेकिन अभी तक तुनिशा के परिवार वाले यहाँ पर नहीं पहुँचे। हालांकि तुनिशा का जो शव है वो So, as we speak, Sheezan's sister, who's currently at the Vajpayee police station, they're recording her statement. We have a guest also joining us right now. We have Athar Siddiqui, Tunisha's co-star, joining us. Thank you for taking out time and speaking to us. To begin with, if you can tell us more about the personal life of Tunisha, how much did you know her, if she had many friends, and what do you think really forced her to take that extreme step? I was working with her on the show of Ali Baba. Thing is that she was very cheerful, always happy, full of life. It was like working smoothly with that actor always. उसके साथ काम करके हमेशा अच्छा लगता था क्योंकि वो मूड भी रिफ्रेश हो जाता था और एक पॉजिटिव वाइब हमेशा सेट पे रहती थी क्योंकि उसकी स्माइल ही एक अलग ही बहुत चेयरफुल सी स्माइल थी। और मैं नहीं जानता रीजन क्या था, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि उसको देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि वो ये स्टेप ले सकती है क्योंकि वो कहीं से भी किसी एंगल से डिप्रेस नहीं लगती थी, मुस्कुराती रहती थी। अब शायद एक एक्टर है, वो अपनी बहुत सारी चीजें छुपाता है, दिखाता नहीं है, शायद ये भी रीजन हो सकता है। बाकी अंदर से कौन कैसा फील कर रहा है, वी हार्डली नो अबाउट दैट। सो मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ है पर्सनली। और ये वाकई में बहुत शॉकिंग बात है जो सब कुछ हुआ है, जो पता चला है मुझे भी, मेरे लिए बहुत शॉक की बात थी। बहुत देर तक तो यकीन भी नहीं हुआ ऐसा हो गया है, क्या सच में ऐसा हुआ। We've also been speaking to other co-stars who worked with her. They've been saying that she tried to distance herself for quite some time, and there was definitely something which was wrong in her personal life which probably could have led to that extreme step. Anything you can tell us about whether there was something wrong in the relationship that she shared with Sheezan, and was she really with her friends? Was she spending that much time with her friends as she used to earlier? Usually there are two shifts going on the set. I'm on a different shift, different unit. So मेरा यूजुअली जो काम होता है वो दूसरे वाले यूनिट में होता है, तो उस यूनिट में मैं कम ही जाता हूँ, वहाँ मेरे सीन्स कम ही लगते हैं। तो उतना वक्त मैं सेट पर तुनिशा के साथ नहीं बिताया करता था कंपैरेटिवली, जितने उनके ग्रुप के बाकी लोग बिताया करते थे, क्योंकि वो एक पॉजिटिव साइड हो जाती है, एक नेगेटिव साइड हो जाती है। मैं एंटेगनिस्ट का रोल प्ले कर रहा था, सो वो एक विलन वाला आर्मी अलग हो जाता है। सो इस बारे में मैंने खुद से कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, ना ही मैंने ऐसा कुछ देखा। तो बाकी आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, जो अभी चीजें देखने को मिल रही हैं वो कुछ और ही दर्शा रही है, बट मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मैंने उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग देखी थी, एक ओवर फ्रेंडली बिहेवियर देखा था, मस्ती मजाक देखी थी, कभी ऐसे गुमसुम बैठे हुए तो नहीं देखा। हाँ, वो थोड़ा बीमार थी कोल्ड एंड फ्लू के कारण, ऐसा मुझे फील हुआ था, क्योंकि जब मेरी बात हुई थी तब भी, तो तब थोड़ी सी वो मुझे हल्की सी कम बातचीत करती हुई लगी, दैट्स ऑल। बाकी तो मुझे ऐसा नहीं लगा। सो आप बोल रहे हैं कि उसके बिहेवियर में एक पैटर्न था जो चेंज आपको लगा हो रहा था, वो काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रही थी। उसके काफ़ी फ्रेंड्स ने ये भी बोला है कि वो काफ़ी टाइम से चुप रहती थी। आपको लगता है ये भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है जो पुलिस देखेगी कि ऐसा क्या था जो उसको इतना परेशान कर रहा था जिसकी वजह से उसने ये स्टेप लिया? कि हर वक्त को आप किसी पे भी नजर नहीं रख सकते,
आपके को स्टार को आप बार बार तो ऐसे देख नहीं सकते कि कब कौन क्या रिएक्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जब आप शांति से बैठे होते हैं सेट पर, अपने प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अपने डायलॉग की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस चीज से तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने ये महसूस नहीं किया है। उसके अगर हम प्रोफेशनल करियर की बात करें तो निशा के बारे में, शी वाज जस्ट 20 years old, her career she was doing quite well professionally. If you were to remember her, how do you remember her? Talk to us about her goals, her ambitions, because that would be really important, because her career was growing, she was quite young when she took that step. So from what we can see, there was definitely something wrong in her personal life which probably forced her to take that step. या प्रोफेशनल से रिलेटेड हमारी बात भी हुई थी। हमारा एक काफी लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ था कि कैसे मैंने अपने करियर की शुरुआत की है, कैसे तुमने की है। तो तुनिशा ने मुझे बोला था, मैं 11 साल की थी तब मैं पहली बार फितूर मूवी में आई थी, और उसके बाद मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुंची हूँ। तो तब वो किस्सा बहुत अच्छा था, हमारा कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा चला था और बहुत लंबा चला था। तो शी वॉज एंजॉइंग इट। तो वो मोमेंट्स मुझे आज भी याद आते हैं। तो एक अजीब सा फील होता है कि कुछ ही दिन पहले, कुछ ही हफ्तों पहले हम साथ में बैठ के बात कर रहे थे और अचानक से वो शख्स अब आपके साथ नहीं है। तो वो करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस थी, और ये एक ऐसी चीज थी जो वो करना चाहती थी। वो इंडस्ट्री से जुड़े रहना चाहती थी, उसको काम करना अच्छा लगता था। एक तरह से उसका ड्रीम कह सकते हैं। 11 साल की थी तब से काम कर रही थी, अब लगभग 21 साल की हो गई थी और करियर में बहुत अच्छा कर रही थी। आने वाला वक्त अगर उसको ऊपर वाला दिखाता तो शायद वो बहुत ज्यादा अच्छा वक्त होता, क्योंकि ये अपने बेस्ट फेज में थी। एक के बाद एक बैकअप शोज करना, ये काबिले तारीफ होती है टीवी एक्टर के लिए। हम सब सोचते हैं कि जब एक शो खत्म हो जाता है तो उसके बाद दूसरा शो मिलेगा, कितने वक्त में मिलेगा, बट टचवुड वो बहुत अच्छा कर रही थी। और इस बारे में हमारी बात भी हुई है, मैं बोल भी रहा था। मैंने इवन उसको बोला था कि मैं पहले इंजीनियरिंग की है, उसके बाद बाकी सब चीजें की हैं, फिर मैं इंडस्ट्री में आया हूँ। तो वो बोल रही थी मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं तो बचपन से बस एक्टिंग ही कर रही हूँ, और चीजें तो मैंने की ही नहीं है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम्हारा एक चीज पर शुरू से फोकस था। हम लोग तो कई नाव में सवार हुए थे, फिर जाकर एक जगह आकर टिके हैं, बट तुम्हारा फोकस पहले से ही था। तो वो मोमेंट्स बहुत अच्छे थे, वो बातचीत। तो उससे बात करके हमेशा यही महसूस हुआ कि वो इस चीज से प्यार करती थी, इस प्रोफेशन से प्यार करती थी। और एक्टिंग के लिए भी मुझे उसके साथ अदाकारी करने में बहुत मजा आया। बहुत स्मूथली चीजें हो जाती थी, लंबे लंबे डायलॉग्स भी होते थे, तो उसके लिए इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी। सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाता था, हंसते खेलते वो चीजें हो जाती थी। और जैसा कि मैंने देखा उस वक्त जब हमारा सीन एक साथ में शूट हो रहा था, तो वो काफी बीमार थी। बीमार ऐसे न उसको रनिंग नोज का इशू हो रहा था, फ्लू हो रहा था आई थिंक। बट सीन के दौरान उसने एक बार भी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, वक्त नहीं मांगा। उसने सीन को बखूबी अच्छे तरीके से निभाया, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे काम कर रहे हो, महीने में 28 दिन काम कर रहे हो, तो एक एंजाइटी हो जाती है, वो थकान भी हो जाती है। बट स्क्रीन पे आपको हमें ये नहीं दिखाना होता है, तो वो बखूबी कर रही थी। All right, thank you so much for speaking to us. So Athar Siddiqui, co-star who worked with Tunisha. Of course, with that, we hope that justice is served to the family at the earliest, as the police is trying to join the dots and trying to crack this case. Of course, the mystery that continues to shroud Tunisha's death case. Slipping into a very short break, coming up on the other side, Coachers and Videocon founder Venugopal Dhoot produced before court in loan fraud case. And rare in the history that story of sacrifice is forgotten, says Prime Minister, hailing Guru Gobind Singh and his sons. छक्का नहीं, टूटा। आपके टाइल्स को चाहिए MY के लेटिक्री टाइल एडेसिव। फॉर्मूला ऐसा कि अब टाइल न टूटेगा न छूटेगा। Ladies and gentlemen, you expected the puzzle, but for one person, this is not a game. Explain it to us, detective.
Everyone is in danger. All right, when's the murder mystery start? ये सामने फ्यूल पंप है, वहां से ले लें। जी सर फ्यूल तो पिछले पंप में भी मिल जाता, इंडियन ऑयल में ऐसा क्या है? कुछ है स्पेशल, खुद ही देख लेना। स्पेशल? अरे इंडियन ऑयल की तो बात ही कुछ और है। जरा देखिए, फ्यूल तो बराबर डाल रहे हैं ना। अरे यहाँ कंप्लीट ऑटोमेशन है, मतलब प्योर और पूरा दोनों ही। इन सेंट्रली मॉनिटर्ड मशीन्स की एक एक रीडिंग का हिसाब है यहाँ पर। क्या हुआ? सर बिल। हाँ बिल हो गया। वाह सर। क्या था ना, इंडियन ऑयल की बात ही कुछ और है। इंडियन ऑयल, पहले इंडियन फिर ऑयल। For how long will you continue being tensed about the future? Pension can free you from future's tension. With LIC's new Pension Plus, make your own pension plan because this plan creates market-linked wealth for your future. Moreover, this plan comes with guaranteed additions and also offers various options for receiving pension so that you grow young and tension-free. LIC, हर पल आपके साथ. Another Pakistani drone has been shot down by the BSF nearby the Amritsar international border. Car catching fire in Delhi's ITO area. Taliban flag has been hoisted in North Waziristan in Pakistan. North Waziristan has a heavy presence of the Tehreek-e-Taliban Pakistan fighters. And to another top story we've been tracking, Vadra Congress has sparked a massive controversy for eulogizing Jinnah. In fact, just the same day when Kharge's aide had put out a tweet in which he had insulted the former Prime Minister of the country, Atal Bihari Vajpayee, on the very same day, Vadra Congress leader Pawan Khera had put out another tweet in which he eulogized Jinnah. So the very same day when Vadra Congress insulted Atal Bihari Vajpayee, Pawan Khera, the Congress leader, commemorating Jinnah and eulogizing him, in fact, in this tweet that he had put out, where he says that his speech of 11th August 1947 to Pakistan Constituent Assembly did not mention the word Islam even once. The speech has forever been a subject of debate among historians and analysts. A very strange and opportunistic omission of the word Islam in his important speech by a man who fought for a separate nation on religious lines. So clearly a lot of explanation that the Vadra Congress will have to give. So BJP also demanding an apology from the opposition, saying that the Vadra Congress must apologize over the tweets that were put out earlier by the Kharge, in fact by the aide of Kharge, Pani Sanjay, who's now been forced to delete that tweet. And of course the another one tweet that came in from Congress leader Pawan Khera. A lot of reactions also coming in on this big story that we are tracking. Let's listen into this reaction coming in from BJP's Nalin Kohli. दोहरे मापदंड जो है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जुड़े हुए एक गौरव पाठी जी हैं, उनके बयान देखिए, अटल जी पे अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा उनकी समाधि पे और वहां पर फूल चलाऊंगा या कुछ ऐसे करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ गाली देती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें जाकर वहां पर इज्जत से जाना। तो ये दोहरे मापदंड नहीं है तो और क्या है? देखिए, इसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अब इसे कहते हैं कि अज्ञानता में हीरो और ज्ञान में ज़ीरो। अब दिक्कत इनकी ये है कि कभी अर्थव्यवस्था के ये अर्थशास्त्री बन जाएंगे, कभी जो है वो हमारे सुरक्षा नीति पर जो है वो सुरक्षा के विशेषज्ञ बन जाएंगे, तो कभी विदेश नीति पर बन जाएंगे। तो इस तरह का जो इनका
अज्ञानता भरा हुआ बेवकूफ़ी है वो हर दिन सामने आती है। लेकिन उनको एक बात समझ लेना चाहिए, ये देश मजबूत हाथों में है, महफूज हाथों में है। कोई भी जो है वो दुनिया की ताकत इस देश के सम्मान, इस देश के स्वाभिमान और इस देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मोदी जी के रहते हुए इन्हें भी इस बात का एहसास है। का जो शीर्ष नेतृत्व है, खड़गे जी हों, सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी, इनको बताना होगा कि एक तरफ तो आप नाटक करते हैं, आप श्रद्धांजलि देने सदैव अटल पर जाते हैं, दूसरी तरफ आप ही के नेता ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। यह दिखाता है कि अंदर से कितना जहर है और ऊपर से क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक कद ऐसा है, उनकी विचारधारा इतनी अटल और अडिग है कि उसको आपको सम्मान देना होगा। तो इस मजबूरी में राहुल गांधी वहां जाते हैं। Slipping into a very short break, coming up on the other side, police sources revealed just 15 minutes before the alleged suicide, Tunisha had lunch with Sheezan at 3 p.m. And coachers, in fact, will get you news break as CBI arrests Videocon founder Veer Bal Divas. Details and more news break on the other side. Uncontrolled diabetes can lead to long-term complications and damage your heart, eyes, kidney and nerves if remains untreated. With Beau's Diabetes Care Program, get online doctor consultation, all your prescribed medicines and a dietitian consultation. Get a free glucometer and expert advice with Beau's Diabetes Care Program. Give a missed call on 740-1100. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। ऑलराउंडर हम भी है। और तुम्हारा किचन कभी स्टेन्स, कभी जर्म्स तो कभी पानी। आपके किचन और बाथरूम्स को चाहिए MYK लेटिक्रीट SP100, टाइल जॉइंट का ऑलराउंडर। MYK लेटिक्रीट SP100, जोड़ हो तो ऐसा। Another Pakistani drone has been shot down by the BSF nearby the Amritsar international border. Car catching fire in Delhi's ITO area. Taliban flag has been hoisted in North Waziristan in Pakistan. North Waziristan has a heavy presence of the Tehreek-e-Taliban Pakistan fighters. And news break coming in Videocon fraud case, order reserved as the arguments were presented in the court today. CBI arrested Videocon group founder Veer Bal Divas in connection with the ICICI bank fraud case. The 71-year-old was arrested from Mumbai nearly 3 days after former CEO and MD of ICICI Bank, Chanda Kochar, and her husband were taken into custody. Speaking to Republic exclusively, Tunisha's mother claimed that Tunisha was being used, cheated on by Sheezan.
further adding that Sheezan had promised to get married to Tunisha despite being involved with other girls. मैं सबको आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीज़ान ने टुनीशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने टुनीशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी टुनीशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीज़ान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है, बस बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। As per sources, accused Sheezan told the police during interrogation that a few days before Tunisha had tried to commit suicide, but at that time Sheezan had saved her and the accused even told Tunisha's mother about it. Meanwhile, family members of Tunisha have alleged that co-actor Sheezan harassed Tunisha. Police is currently investigating electronic gadgets and phones seized. Maharashtra Minister Girish Mahajan made a big statement in Tunisha Sharma's death case, stating that it is a matter of love jihad and that the police is investigating the case. अभी अभी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। A day after Vadra Congress leader Gaurav Pandey received massive criticism for his controversial tweet insulting Atal Bihari Vajpayee, he has now been forced to delete the tweet. After insulting former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his birth anniversary, Congress remembered Muhammad Ali Jinnah. On the same day, Congress leader Pawan Khera said that his speech of 11th August 1947 to the Pakistan Assembly does not mention the word Islam even once. Meanwhile, the Delhi High Court has directed relevant authorities to transfer the convict in Battle House encounter case Shehzad Ahmed to the GTB hospital to Safdarjung hospital. An application seeking transfer moved, stating that he has been in hospital for last 18 days, but his condition is deteriorating. Meanwhile, tensions prevailed in Krishna district of Andhra Pradesh after retaliation after face-off between the TDP and the YSRCP leaders. In fact, the police used lathis on the TDP and the YSRCP workers to disperse the crowd. A short break coming up on the other side. Details in the Tunisha death case as police reveals just 15 minutes before the alleged suicide, Tunisha had lunch with Sheezan at 3 p.m. Congress Pawan Khera commemorates Jinnah in a tweet as he remembers his speech from 1947. Mr. Blanc, you're the world's greatest detective, right? In your words, there has been a murder. The killer wouldn't hesitate to kill again if it covers their tracks. Wow! Well, I'm out of here. Yeah, me too. Lock the door. Stay in your rooms. Everyone is in danger. Are you calling me dangerous? Well, we'll see. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amritkal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. Uncontrolled diabetes can lead to long-term complications and damage your heart, eyes, kidney and nerves if remains untreated. With Beau's Diabetes Care program, get online doctor consultation, all your prescribed medicines and a dietitian consultation. Get a free glucometer and expert advice with Beau's Diabetes Care program. Give a missed call on 740 1100.
Everyone looks at the world today. At Hyundai, we go beyond with experiences that take us forward. Innovations that are intuitive. At Hyundai, we are going beyond mobility, and you are welcome to join us. कि शीज़ान ने टुनीशा को धोखा दिया, उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी टुनीशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। Top headlines at 5 p.m. Tunisha's mother claims Sheezan was in a relationship with other women, cheated and tortured Tunisha. Police sources reveal just 15 minutes before the alleged suicide, Tunisha had lunch with Sheezan at 3 p.m. Coachers and Videocon founder Venugopal Dhoot produced in court. Court reserves order in the case. Congress Pawan Khera commemorates Jinnah in a tweet as he remembers his speech from 1947. औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। Prime Minister Modi makes big statement, mentions how Aurangzeb tried forced conversions, but Shahzades did not give in. Rare in the history that story of sacrifice is forgotten, says Prime Minister, hailing Guru Gobind Singh and his sons. And starting with the big news break coming in relation to the Videocon fraud case after the coachers were presented in the court. We now given to understand that the court has reserved its order in the case. Alisha getting us that big news break in the Videocon fraud case, the court having reserved its order. The arguments, of course, have concluded. We'll go across to Alisha to get us the details of the remand copy as well that we've accessed in the Videocon fraud case. So the big news break coming in this hour, that the court has reserved its order in the case. We'll go across to Alisha for more details on that, but this is of course in relation to the Videocon fraud case, which amounts to over 3,000 crore rupees. Now remember, on 23rd of December, Chanda as well as Deepak Kochar were arrested by the CBI, and today Venugopal Dhoot was also arrested by the CBI in connection with the same case. The news break coming in this hour that the order has been reserved in this case, and we've also accessed that remand copy, the details of which we'll go across to Alisha to get us the details of the remand copy that we've accessed. But remember, Chanda Kochar, who was the former CEO of ICICI Bank, part of panel that cleared Videocon loan and even sanctioned loan of 3,000 crore rupees to Videocon, gave loan to Videocon in period between 2010 till 2012. So the news break coming in this hour that the court has reserved its order in the case. All right, we'll go across again to Alisha to get us more details of the case. But just to read out the remand copy that we've accessed, which states, in fact, in which the arguments have been presented by the court. Just reading out some of the key excerpts from the remand copy which we've accessed, which mentions that today FIR named accused Dhoot Managing Director, the founder of the Videocon, has been arrested as he's not been cooperating with the investigation and has been inconsistent in his statements. That medical examination of Dhoot has also been conducted. So those are some of the details just coming in.
Doot has changed his version on several occasions during course of investigation. He has not disclosed full and true facts of the case, and for making proper investigation and taking the case to logical end, he is required to be confronted with Deepak Kochhar and Chanda Kochhar. As such, his one-day police custody may be granted to CBI. So those were some of the arguments that were presented. Alisha joining us for more on that. Alisha, take us through the remand copy that we've accessed in this case. Well, Tunisha, we know that there are three accused in the ICICI Bank and Videocon money laundering case where Chanda Kochhar, Deepak Kochhar and Venugopal Dutt, who has already been produced before the court. And now we have accessed the remand copy of CBI, which clearly mentioned that FIR named accused Venugopal Dutt, who is the managing director of a Videocon group, has been arrested, and he has not been cooperating with the investigation and has been inconsistent in his statement, which is why he's been arrested and now being produced even before the court. What has also been said that Venugopal Dutt has changed his version on several occasions during the course of investigation. He has not disclosed the full and true facts of the case, and for making proper investigation and taking the case to logical end, he is required to be confronted with Deepak Kochhar and Chanda Kochhar. As such, in one day, police custody may be granted to CBI. But before the court, where we know that where the CBI asked for 3-day custody of Kochhar and Venugopal Dutt because they all need to be confronted. What has also been mentioned that there has been irregularity which has really caused a loss to the ICICI Bank, which is where in 2017, after which there is a constant investigation that has been conducted by Central Bureau of Investigation, and now getting all the evidence that has already been come across before the agency, after which Chanda Kochhar and Deepak Kochhar, who were arrested 3 days back, and it was 3 days custody that was granted by the special CBI court, and today both have been presented. They were both produced before the court, and and what has been very took out All right, Alisha, there seems to be a network problem. We'll connect with Alisha again. So the court having reserved its order in the Videocon fraud case, we've also accessed the CBI remand copy in this case. In fact, remember, this case amounts to the scam in the involves amounts to almost 3,000 crore rupees. So it's Chanda Kochhar, Deepak Kochhar as well as Venugopal Dutt who are in the dock in connection with the Videocon fraud case. All right, moving on, tracking the other big story we've been following very closely. This is the death case of Tunisha Sharma. The mystery, of course, continues to shroud with several angles being probed by the police at this point in time. Remember, Tunisha's mother has alleged that Sheezan, the accused, had cheated on Tunisha Sharma, and we're also given to understand that the duo had conversation just 15 minutes before Tunisha was forced to take that extreme step. We've of course been speaking to the family and friends of Tunisha who say that the two were in a relationship. It was a strained relationship of sorts between Tunisha and Sheezan, who is in custody of the police. We'll go across to Sandeep as well to get us the latest he's tracking on this big story. But police police sources telling Republic that Tunisha had happily left her home on Saturday morning to go to the serial set, and that Sheezan and Tunisha had lunch together in the makeup room at around 3 p.m. After the first shift shoot got over. Police thereby is investigating what really transpired in the intervening time when Tunisha was forced to commit suicide, take that extreme step at around 3:15 p.m. So it will be crucial for the police to find out as to what really transpired in that 15 minutes time frame. Just that time when Tunisha and Sheezan had the lunch, and 3:15 when Tunisha was forced to take that extreme measure. All right, we also spoke exclusively to Tunisha's co-star Athar Siddiqui. Let's listen in on what he had to say about Tunisha Sharma. I was working with her on the show of Ali Baba. The thing is that she was very cheerful, always
happy, full of life. It was like working smoothly with that actor always. उसके साथ काम करके हमेशा अच्छा लगता था क्योंकि वो मूड भी रिफ्रेश हो जाता था और एक पॉजिटिव वाइब हमेशा सेट पे रहती थी क्योंकि उसकी स्माइल ही एक अलग ही बहुत चेयरफुल सी स्माइल थी। और मैं नहीं जानता रीजन क्या था, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि उसको देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि वो ये स्टेप ले सकती है क्योंकि वो कहीं से भी किसी एंगल से डिप्रेस नहीं लगती थी, मुस्कुराती रहती थी। अब शायद एक एक्टर है, वो अपनी बहुत सारी चीजें छुपाता है, दिखाता नहीं है, शायद ये भी रीजन हो सकता है। बाकी अंदर से कौन कैसा फील कर रहा है, वी हार्डली नो अबाउट दैट। सो मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ है पर्सनली। और ये वाकई में बहुत शॉकिंग बात है जो सब कुछ हुआ है, जो पता चला है मुझे भी, मेरे लिए भी बहुत शॉक की बात थी। बहुत देर तक तो यकीन भी नहीं हुआ ऐसा हो गया है, क्या सच में ऐसा हुआ। We've also been speaking to other co-stars who worked with her. They've been saying that she tried to distance herself for quite some time, and there was definitely something which was wrong in her personal life which probably could have led to that extreme step. Anything you can tell us about whether there was something wrong in the relationship that she shared with Sheezan, and was she really with her friends? Was she spending that much time with her friends as she used to earlier? Usually there are two shifts going on the set. I'm on a different shift, different unit. So मेरा usually जो काम होता है वो दूसरे वाले यूनिट में होता है, तो उस यूनिट में मैं कम ही जाता हूँ, वहाँ मेरे सीन्स कम ही लगते हैं, तो उतना वक्त मैं सेट पर तुनिशा के साथ नहीं बिताया करता था कंपैरेटिवली, जितने उनके ग्रुप के बाकी लोग बिताया करते थे, क्योंकि वो एक पॉजिटिव साइड हो जाती है, एक नेगेटिव साइड हो जाती है। मैं एंटागनिस्ट का रोल प्ले कर रहा था, सो वो एक विलन वाला आर्मी अलग हो जाता है। सो इस बारे में मैंने खुद से कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, ना ही मैंने ऐसा कुछ देखा। तो बाकी आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, जो अभी चीजें देखने को मिल रही हैं वो कुछ और ही दर्शा रही है, बट मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मैंने उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग देखी थी, एक ओवर फ्रेंडली बिहेवियर देखा था, मस्ती मजाक देखी थी, कभी ऐसे गुमसुम बैठे हुए तो नहीं देखा। हाँ, वो थोड़ा बीमार थी कोल्ड एंड फ्लू के कारण, ऐसा मुझे फील हुआ था क्योंकि जब मेरी बात हुई थी तब भी, तो तब थोड़ी सी वो मुझे हल्की सी कम बातचीत करती हुई लगी, दैट्स ऑल। बाकी तो मुझे ऐसा नहीं लगा। सो आप बोल रहे हैं कि उसके बिहेवियर में एक पैटर्न था जो चेंज आपको लगा हो रहा था, वो काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रही थी, उसके काफ़ी फ्रेंड्स ने ये भी बोला है कि वो काफ़ी टाइम से चुप रहती थी। आपको लगता है ये भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है जो पुलिस देखेगी कि ऐसा क्या था जो उसको इतना परेशान कर रहा था जिसकी वजह से उसने ये स्टेप लिया? कि हर वक्त आप किसी पे भी नजर नहीं रख सकते, आपके को स्टार को आप बार बार तो ऐसे देख नहीं सकते कि कब कौन क्या रिएक्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जब आप शांति से बैठे होते हैं सेट पर, अपने प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अपने डायलॉग की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस चीज से तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने ये महसूस नहीं किया है। उसके अगर हम प्रोफेशनल करियर की बात करें तो निशा के बारे में, शी वाज जस्ट 20 years old, her career she was doing quite well professionally. If you were to remember her, how do you remember her? Talk to us about her goals, her ambitions, because that would be really important, because her career was growing, she was quite young when she took that step. So from what we can see, there was definitely something wrong in her personal life which probably forced her to take that step. या प्रोफेशनल से रिलेटेड हमारी बात भी हुई थी। हमारा एक काफी लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ था कि कैसे मैंने अपने करियर की शुरुआत की है, कैसे तुमने की है। तो तुनिशा ने मुझे बोला था, मैं 11 साल की थी तब मैं पहली बार फितूर मूवी में आई थी, और उसके बाद मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुंची हूँ। तो तब वो किस्सा बहुत अच्छा था, हमारा कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा चला था और बहुत लंबा चला था, तो शी वॉज एंजॉइंग इट। तो वो मोमेंट्स मुझे आज भी याद आते हैं, तो एक अजीब सा फील होता है कि कुछ ही दिन पहले, कुछ ही हफ्तों पहले हम साथ में बैठ के बात कर रहे थे और अचानक से वो शख्स अब आपके साथ नहीं है। तो वो करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस थी, और ये एक ऐसी चीज थी जो वो करना चाहती थी। वो इंडस्ट्री से जुड़े रहना चाहती थी, उसको काम करना अच्छा लगता था। एक तरह से उसका ड्रीम कह सकते हैं। 11 साल की थी तब से काम कर रही थी, अब लगभग 21 साल की हो गई थी और करियर में बहुत अच्छा कर रही थी। आने वाला वक्त अगर उसको ऊपर वाला दिखाता तो शायद
वो बहुत ज्यादा अच्छा वक्त होता, क्योंकि ये अपने बेस्ट फेज में थी। एक के बाद एक बैकअप शोज करना, ये काबिले तारीफ होती है टीवी एक्टर के लिए। हम सब सोचते हैं कि जब एक शो खत्म हो जाता है तो उसके बाद दूसरा शो मिलेगा, कितने वक्त में मिलेगा, बट टचवुड वो बहुत अच्छा कर रही थी और इस बारे में हमारी बात भी हुई है। मैं बोल भी रहा था, मैंने इवन उसको बोला था कि मैं पहले इंजीनियरिंग की है, उसके बाद बाकी सब चीजें की हैं, फिर मैं इंडस्ट्री में आया हूँ। तो वो बोल रही थी मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं तो बचपन से बस एक्टिंग ही कर रही हूँ और चीजें तो मैंने की ही नहीं है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम्हारा एक चीज पर शुरू से फोकस था। हम लोग तो कई नाव में सवार हुए थे, फिर जाकर एक जगह आकर टिके हैं, बट तुम्हारा फोकस पहले से ही था। तो वो मोमेंट्स बहुत अच्छे थे, वो बातचीत। तो उससे बात करके हमेशा यही महसूस हुआ कि वो इस चीज से प्यार करती थी, इस प्रोफेशन से प्यार करती थी, और एक्टिंग के लिए भी मुझे उसके साथ अदाकारी करने में बहुत मजा आया। बहुत स्मूथली चीजें हो जाती थी, लंबे लंबे डायलॉग्स भी होते थे, तो उसके लिए इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी, सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाता था, हंसते खेलते वो चीजें हो जाती थी। और जैसा कि मैंने देखा उस वक्त जब हमारा सीन एक साथ में शूट हो रहा था, तो वो काफी बीमार थी, बीमार एज इन उसको रनिंग नोज का इशू हो रहा था, फ्लू हो रहा था आई थिंक। बट सीन के दौरान उसने एक बार भी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, वक्त नहीं मांगा, उसने सीन को बखूबी अच्छे तरीके से निभाया, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे काम कर रहे हो, महीने में 28 दिन काम कर रहे हो, तो एक एंजाइटी हो जाती है, वो थकान भी हो जाती है, बट स्क्रीन पे आपको हमें ये नहीं दिखाना होता है, तो वो बखूबी कर रही थी। सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीज़ान ने टुनीशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने टुनीशा से ब्रेकअप किया, और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी टुनीशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीज़ान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। All right, Monica is joining us from JJ Hospital, where the family of Tunisha will be going to receive the body of Tunisha. The last rites, of course, will be performed tomorrow. Monica, have you been able to speak to the family of Tunisha? What are their demands? What is it that the family members have to say at this point in time? देखिए, अभी डिमांड्स उनकी कुछ नहीं है। डिमांड उनकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुनिशा की जो माँ है वो ये कह रही है कि भाई मेरा तो बच्चा चला गया, मैंने अपनी बेटी को खो दिया, और ऐसे में वो रो रो के सिसक के सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग कर रही हैं कि शीजान को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और उनकी बेटी तुनिशा को न्याय मिलना चाहिए। यही सिर्फ उनकी माँ का कहना है। तुनिशा के जो मामा है वो लगातार मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। इवन अभी भी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ, मैं JJ हॉस्पिटल के बाहर ही हूँ। ये गेट नंबर 14 है JJ हॉस्पिटल का, जो मेरे पीछे देख पा रही है। मैं अपने विजय सलल को कहूंगी कि प्लीज विजुअल्स दिखाएं। ये देखिए, गेट नंबर 14 है JJ हॉस्पिटल का, और यहीं से जो पार्थिव शरीर है तुनिशा का वो लेकर बाहर आएंगे। अंदर मामा है जिन्होंने अभी डेथ सर्टिफिकेट जो है तुनिशा का वो क्लेम किया है, और उसके बाद अंदर जो पूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो पूरा प्रोसीजर होता है वो फॉलो अप किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अंदर एम्बुलेंस लग गई है मोर्चरी के जस्ट बाहर, यानी कि कुछ ही देर में पूरी फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। एंड देन उसके बाद एम्बुलेंस में रखकर उनका जो पार्थिव शरीर है तुनिशा का वो बाहर की तरफ लेकर आया जाएगा, इसी गेट से बाहर लेकर आएगा। और आपको ये बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर ये दे दूं कि सीधे घर नहीं लेकर जाएगा, यानी कि इंद्रप्रस्थ जो बिल्डिंग है मीरा रोड पर, तुनिशा का जो घर है वहां पर सीधे नहीं लेकर जाएंगे उनके पार्थिव शरीर को। वहां मीरा रोड में पास में ही मोर्चरी है, मोर्चरी में लेकर जाएंगे, किसी मोर्चरी में रखा जाएगा पार्थिव शरीर को, और उसके बाद फिर कल मीरा रोड पर इंद्रप्रस्थ जो उनकी बिल्डिंग है, उनका घर है, वहां पर लेकर जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, और फिर शाम 4 बजे कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। यानी कि फाइनल जो रिचुअल्स होते हैं क्रिमिनेशन के, फाइनल जो राइट्स होते हैं, उनको पूरा कंप्लीट किया जाएगा। अंदर मामा उनके मौजूद है और लगातार उनके मामा का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फैमिली को जिस तरीके से उन्होंने बांधा हुआ है, क्योंकि उनकी माँ बातचीत नहीं कर पा रही है, उन्होंने मीडिया में बस एक स्टेटमेंट जारी किया, और हम लोगों ने भी जब उनसे बातचीत की, उन्होंने हमें बस ये कहा कि मेरी बच्ची चली गई। एक माँ का दर्द जरा सोचिए, उस पेन को कोई भी महसूस नहीं कर सकता, उस पेन के बारे
बारे में कोई भी उस पेन को डिफाइन नहीं कर सकता जिस पेन से इस वक्त उनकी मदर, उनकी माँ गुजर रही है, क्योंकि सिंगल चाइल्ड थी तुनिशा, और ऐसे में अपनी सिंगल चाइल्ड का चले जाना, अपनी इकलौती बेटी का चले जाना, वो भी इतनी कम उम्र में, 20 साल की मात्र इतनी कम उम्र में। तुनिशा का उभरता हुआ करियर था, बॉलीवुड का, टीवी सीरियल्स का एक उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ चेहरा वो थी। 3 फिल्मों में उन्होंने काम किया, 6 से ज़्यादा सीरियल्स में उन्होंने काम किया, और ऐसे में अगर उनका करियर और अच्छा हो सकता था, लेकिन न जाने क्या ऐसा हुआ उस 15 मिनट के भीतर, क्योंकि 3:15 बजे के करीब उन्होंने मौत को गले लगाया, खुद को हैंग किया, और 3 बजे के करीब वो लंच करती हैं अपने को एक्टर और अपने कथित तौर पर बॉयफ्रेंड शीजान मोहम्मद खान के साथ। और ऐसे में ये बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर हुआ क्या उस 15 मिनट के दरमियान कि इतना बड़ा कदम जो है वो तुनिशा ने उठाया और खुद को हैंग कर लिया, यानी कि फांसी के फंदे पर वो झूल गई। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ तक कि मदर नेचर स्टूडियो जो है वसई में, वहाँ पर भी पुलिस की टीम आज गई और जांच पड़ताल की। लगातार वहाँ पर शनिवार से पुलिस की टीम मौजूद है, और आज भी जब ये खुलासा किया शीजान ने कि हमने 3 बजे के करीब लंच किया था, क्योंकि वो बीते 24 घंटे से तुनिशा ने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। स्पेशली उसने ये भी जिक्र किया शीजान ने पुलिस के साथ कि श्रद्धा वॉकर मर्डर केस आफ्ताब वाला जो सामने आया, उसके बाद से तुनिशा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी, उसको डर लगने लग गया था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। दोनों के बीच में क्योंकि जो रिलीजन है वो भी अलग अलग था, इसकी वजह से वो और परेशान रहने लग गई थी। तो ऐसे में शीजान ने पुलिस को ये बयान दिया है कि मैंने धर्म और उम्र का हवाला देकर उसके साथ ब्रेकअप किया, क्योंकि शीजान 28 साल की उम्र का था, 28 ईयर्स उसकी एज थी, वहीं तुनिशा शर्मा जो है वो मात्र 20 साल की लड़की थी। और ऐसे में धर्म और उम्र का हवाला देकर शीजान ने तुनिशा के साथ ब्रेकअप किया। और ये तमाम तथ्य हैं जो निकल कर सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जो जांच पड़ताल है उसे पूरा कर रही है। शीजान लगातार खुलासे कर रहा है 4 दिन की, क्योंकि पुलिस कस्टडी में है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। एक खुलासे शीजान की तरफ से किए जा रहे हैं, उसके बिना पर पुलिस जो है अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। लेकिन द मेन पॉइंट इज कि पुलिस के हाथ अभी कोई सबूत नहीं है। अगर हम आधिकारिक तौर पर किसी सबूत की बात करें तो किसी सबूत अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है कि आप ये कहें कि ये ऑथेंटिसिटी के साथ एक सबूत है जो पुलिस के हाथ लग गया है और इसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी जो बयानात दे रहा है शीजान, उसके आधार पर जांच चल रही है, और जो को-एक्टर्स बातें कर रहे हैं, जो उनके बयान हैं, उसके आधार पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। वेल, मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दूं, क्योंकि ये वही गेट है जहां से लगभग 5 से 10 मिनट के बाद तुनिशा का जो शव है वो बाहर लेकर आया जाएगा। उनके जो मामा हैं वो बॉडी क्लेम कर रहे हैं और पूरे जो फॉर्मेलिटीज हैं उसे कंप्लीट कर रहे हैं, और उनके शव को बाहर लेकर आया जाएगा। और वो तस्वीरें भी आप लगातार देखेंगे, हम लगातार अपने तमाम दर्शकों तक, अपने तमाम व्यूअर्स तक वो तस्वीरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। यस Monica, stay with us. In fact, just to tell our viewers a little more about what we know so far, the angles that are being probed by the police at this point, what we are given to understand that Tunisha was depressed just days ahead, days before she committed that extreme step. Not just this, we are also given to understand that an argument broke out allegedly between the accused as well as Tunisha just minutes before she committed suicide. In fact, on that note, let's listen in to that conversation we had with one of the co-actors who worked with Tunisha. Mohit, you've gotten to spend some time with Tunisha on the sets. You've been her co-star. What was your bond with her like? I had a very good with her. She's like bacha. I used to call her bacha only because she's only 20, and she used to call me Pachi. And like she was amazing girl. She बहुत ही हंसती खेलती रहती थी सेट पे, मेरे रूम पे आ जाएगी, मस्ती करेगी. She was brilliant in that way. बहुत warm थी, बहुत affectionate थी. और मेरा बॉन्ड उससे ऐसा था, बड़े भाई था उससे। But ज़ीशान के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था on the sets, you know? I have no clue यार. I have no because I keep myself like to myself on the set. मैं ज़्यादा इनसे बात नहीं करता हूँ. But तुनिशा ऐसी लड़की थी जो हमेशा मतलब she used to reach out to you. She's very warm. तो वैसे मुझे I don't get into these personal things with people कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. जी, what kind of relationship they shared. जी, I understand. Yes, absolutely. कभी ऐसा उन्होंने आपके साथ कभी शेयर किया हो that she's feeling depressed or she's having anxiety or of any sort? देखिए मेरे साथ तो कभी उसने नहीं किया. I've never seen her also depressed on the sets, क्योंकि मैंने जब भी हमारे सीन होते थे तो she used to be like बहुत खुश रहती थी, मजाक करती रहती थी वो सेट पे. तो मुझे तो कभी रियलाइज नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है, मतलब that she can take such a step.
साथियों, इतनी कम उम्र में साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे, लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यही किसी भी राष्ट्र के समर्थ युवा का सामर्थ्य होता है। Slipping into a very short break, lots coming up on the other side. Congress leader commemorates Jinnah in a tweet as he remembers a speech from 1947. औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। सोच रहा हूँ कमेंट्री ट्राई करूं। मैच का आखिरी बॉल, तेज तूफानी डिलीवरी, एक धमाकेदार शॉट और ये गया छक्का। छक्का नहीं, टूटा। आपके टाइल्स को चाहिए MY के लेटिक्रीट टाइल एडेसिव। फॉर्मूला ऐसा कि अब टाइल न टूटेगा न छूटेगा। Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया। Wait up. Booking a car service. From here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं। There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. It is important to keep your HbA1c in the target range of 6.5 to 7% to avoid complications. With Beau's Diabetes Care program, get online doctor consultation, all your prescribed medicines and a dietitian consultation. Get a free glucometer and expert advice with Beau's Diabetes Care program. Give a missed call on 740 1100. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amritkal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharti Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. जो है उसको इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर्स लेकर जाएंगे दिल्ली पुलिस। Tense situation prevailed in Andhra Pradesh. Retaliation between the TDP and the YSRCP workers there in Gudivada. Big success for the Jammu and Kashmir police as a major terror hideout of the Lashkar-e-Toiba has been busted. तिहाड़ जेल की
तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धा हत्याकांड का मुख्य आरोपी आफ्ताब को जो है सीबीआई हेडक्वार्टर्स लेकर जाएंगे दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस जो है वहां से आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेने के बाद ये सत्यापित करेगी कि आखिर जो ऑडियो बरामद हुए हैं वो आफ्ताब के हैं या नहीं है। Another Pakistani drone has been shot down by the BSF nearby the Amritsar international border. Car catching fire in Delhi's ITO area. Taliban flag has been hoisted in North Waziristan in Pakistan. North Waziristan has a heavy presence of the Tehreek-e-Taliban Pakistan fighters. कि शीज़ान ने टुनीशा को धोखा दिया, तो उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी टुनीशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। Top headlines at 5:30. Tunisha's mother claims Sheezan was in a relationship with other women, cheated and tortured Tunisha. Police sources reveal 15 minutes before the alleged suicide, Tunisha had lunch with Sheezan at 3 p.m. Coachers and Videocon founder Venugopal Dhoot produced before court in loan fraud case. Congress Pawan Khera commemorates Jinnah in a tweet as he remembers his speech from 1947. गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। Prime Minister Modi makes a big statement, mentions how Aurangzeb tried forced conversions but Shahzades did not give in. Rare in history that story of sacrifice is forgotten, says Prime Minister, hailing Guru Gobind Singh and his sons. And Congress is at it again. They're eulogizing Jinnah, the founder of Pakistan. In fact, trying to emphasize on the fact that he was a secular post-partition. It is one of the top leaders, Pawan Khera, who commemorated Muhammad Ali Jinnah, remembering his speech of 1947, mentioning that how he did not mention Islam in his speech. Now, Congress's tweet, this act, has infuriated many, with the BJP hitting out hard. Let's listen in to some reactions that came in. ये डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का, और इन सारी इश्यूज़ को, सारे डायलॉग्स को एक जगह मिलाते हैं तो ये लगता है कि राहुल गांधी भी कभी कभी अपनी मानसिकता को, कांग्रेस की मानसिकता को छुपाने के लिए कुछ नया इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग बता देते हैं कि राहुल जी जो कर रहे हैं वो नाटक है। रियल क्या है? रियल वो कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट है, चाहे वो उनकी पार्टी की कोई महिला नेत्री हो या पुरुष नेता हो। आप सोचिए, अटल जी के जन्मदिन पे, भारत रत्न अटल जी के जन्मदिन पे, जिनका 5 साल कांग्रेस के 55 साल पे भारी पड़ जाएगा, उस दिन आप जिन्ना को याद करना चाहते हैं? याद करिए, देश देख रहा है। और जो दूसरे लोग हैं, उनकी जो एक महिला नेत्री है, उसका ट्वीट भले ही उन्होंने डिलीट कर दिया हो, लेकिन छुपाने से कांग्रेस की मानसिकता नहीं छुप सकती। तब लगता है कि जो राहुल गांधी का अटल जी को लेकर के बयान है वो मात्र दिखावा है,
छलावा है, ये समझते हैं ऐसे छल करके हम लोगों की मानसिकता अपनी तरफ ला देंगे। हिंदुस्तान जवाब देगा, समय आने पे जवाब देगा। सर, जो कौरवपंथी है उन्होंने तो अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, बट जो पवन खेरा ने जिन्ना जी को याद करते हुए ट्वीट किया था, उसके बाद ठीक 1 घंटे बाद उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि ऐसे व्यक्ति को हमको याद नहीं करना चाहिए। तो क्या ये एक फेस सेवर अटेम्प्ट बोल सकते हैं कि वो ये दिखाने के लिए कि नहीं हम जिन्ना को सपोर्ट नहीं करते हैं, 1 घंटे बाद उसी थ्रेड में वही अलग ट्वीट करते हैं? चूंकि इन्हीं सब बातों से लगता है, देखिए 2 ही बात हो सकती है, या तो राहुल गांधी दिखावा कर रहे हैं या तो राहुल गांधी को उनके पार्टी के नेता नहीं मान रहे हैं। ये दोनों कांग्रेस का मुद्दा है, लेकिन जो अटल जी का अपमान करेगा, जो देश का अपमान करेगा, देश की सेना का अपमान करेगा, उसको ये देश समय आने पे ऐसा जवाब देगा कि उसके आगे सभी बौने दिखेंगे। जिस कांग्रेस पार्टी के नेता चीन और पाकिस्तान के तारीफों के पुल बांधते हों, उनकी ताकत की बात करते हों, हमें उनसे कम से कम किसी स्टेट्समैन, देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर देश को पोखरण विस्फोट करके दुनिया भर की नजरों में मजबूत खड़ा करने का काम किसी ने किया था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। दुनिया ने भारत का लोहा उस समय से मानना शुरू कर दिया था। भारत के बारे में दुनिया का नजरिया उस समय से बदला था और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। आज भारत का मान सम्मान दुनिया भर में बड़ा है। कांग्रेस के सर्टिफिकेट की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं। देश की जनता ने 2014-2019 में रिकॉर्ड मतों से, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बनाया है। कांग्रेस पार्टी लोग इसी प्रकार की बयानबाजी करके लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। वो जिन्होंने भारत माता को टुकड़े करने का काम किया, ऐसे लोगों के प्रति कांग्रेस पार्टी का सद्भाव प्रारंभ काल से रहा है। देखिए, इनका सबका संस्कार ऐसा है। मैं कल देख रहा था श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट भी और श्री अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हैं, भारत रत्न महामना मालवीय जी भारत रत्न हैं और उनको जन्मदिन पर एक ट्वीट करने की भी ज़रूरत नहीं महसूस किए। और किस प्रकार से कल का दिन बीता, इनके ट्वीट करने से जो महापुरुष हैं उनके कद में घटोतरी और बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन इनके जो संस्कार हैं उसका संदेश जाता है। किस प्रकार से बाबूजी कल्याण सिंह जी का निधन हुआ था, श्री अखिलेश यादव जी यहीं लखनऊ में रहते हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं गए थे, यह उनका संस्कार है। और मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमारे वैचारिक रूप से विरोध में रहते थे, लेकिन देश के रक्षा मंत्री थे, उनका दुखद निधन हुआ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जो उनको अंतिम विदा देने के लिए नहीं गया हो। तो भाजपा के संस्कार में, सपा बसपा कांग्रेस के संस्कार में यही अंतर है। And we're moving on to big breaking news that is coming in at this moment. In fact, a few days back, the focus was back on the Sushant Singh Rajput case after the father of Sushant Singh Rajput had spoken out demanding closure. Today, we have a reaction coming in from the mortuary attendant of the Cooper Hospital. This man was present in the mortuary when the autopsy was taking place. Now, he has made certain revelations in the case. He says that it didn't look like a case of suicide. It didn't look like Sushant could have hanged himself because of the marks that were present on the body. He's also mentioning some fractures that Sushant Singh Rajput had possibly before death. Let's listen in to what he said. कभी मैं 2-3 चैनल को मैंने 2 चैनल को मैंने अपना टेस्ट दिया है और अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था। उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज़्यादा सब लोग आते थे और आए थे। हम लोग कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा सोच के हम हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा तो मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो
हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये ज़रा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हज़ार बॉडी कर चुका हूँ, तो इस सब से मैं बात करने गया। तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, यानी थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मैं। हाँ, तो मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद, ये जो गले का मार्किंग जो रहता है हैंगिंग, यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से कैसा दबा मतलब खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था, हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। So there we heard the mortuary attendant of a Cooper hospital. He's one of the persons who witnessed the autopsy taking place, making some very big claims as far as the autopsy of Sushant Singh Rajput is concerned. He says that the marks that he saw on Sushant Singh Rajput's body, it seems like he was beaten, probably. He had fractures, and what he's also saying is that he was afraid to speak out before, and that is why he's speaking out now, and he's ready to testify before the CBI. In fact, we'll get some reactions on this big breaking story that we're getting right now. We have Abhishek, our senior executive editor, joining us live from the Delhi newsroom as the focus is back on the SSR case. And what also needs to be highlighted is how this entire case is once again coming into focus. After last week, we heard Maharashtra Deputy Chief Minister saying that there will be an SIT investigation into the Shah Salyan case, followed by Sushant Singh Rajput, a father speaking out and saying that it's time that he knows what happened on that day. Abhishek is joining us live on this broadcast. Abhishek, in fact, we know that CBI has been investigating this case, but for many months there has been no word from the CBI as far as the Sushant Singh Rajput case is concerned. With the mortuary attendant's version coming out, is it possible that CBI will summon him to record statement, and in what direction will the investigation be headed now? Sarika, we know that the CBI has not really, closed the case. In fact, there was a statement some time back which said that CBI is still looking into it. So obviously, and irrespective, if a new fact comes to light, and this is an important witness, remember he's saying, Roop Kumar, that he was present when the post-mortem happened and that he got instructions that this should not be filmed, while ideally in these kind of cases a filming happens. It was a police case, it was a VIP case according to him. So ideally a filming should have happened. So obviously some heads would roll. This can give a new lease of life to the investigation that has been going on in the Sushant Rajput case. Also, he's bringing spotlight on this particular aspect of the case, which is about foul play. An attempt was being made to dismiss Sushant Rajput's death as a suicide, as something which was because of his own actions done to himself, while remember, viewers would recall how very consistently and persistently Republic brought you many aspects of the death of Sushant Rajput, which indicated towards the possibility that it was not in fact a suicide. So we don't know as yet exactly what is the status of the CBI investigation, but the fact is that CBI did release a statement some time back in which it mentioned that they have yet to reach a conclusion. The investigation is on, that they have not really decided upon any particular conclusion or any particular theory as a conclusion. So in that sense, whatever Roop Kumar is saying obviously makes the investigators perhaps think a little broadly as to what conclusions they were drawing based on the reports they had got. What difference, material difference, does it make to the conclusions that were drawn in post-mortem, for example, if the filming was not done? Is there a possibility that in between there is a story somewhere about some tinkering happening? Is it possible? Because remember, there was a different government at that time.
of the Maharashtra Vikas Agadi and not the alliance that we have between the BJP and the Shinde faction of the Shiv Sena now. So whether that had any bearing, the earlier government in any manner or somebody in the government in any manner influenced the proceedings of the post-mortem. And that's a very significant aspect that really comes out. It opens a Pandora's box. Not just that, in fact, it really brings to focus and back in focus all the work that was done by the Republic Media Network in terms of making sure that spotlight remains on the foul play aspect of Sushant Rajput's death. Remember, just couple of days back, we had the father of Sushant Rajput again raising the issue, not just of Sushant Rajput, but of Disha Salyan also, following which we have seen a special investigation team being set up by the present government. And now with this new revelation and information coming out, it is hoped that at least that SIT would broaden its scope and look into this connected aspect of Sushant Rajput's death, which was whether there was some tinkering done in the post-mortem that was carried out at that time, whether there were some instructions to switch off the video filming and only pictures were taken. Remember, even the pictures themselves told a story, and we brought them out in great detail at that time, frame by frame, and whether even those pictures really did not give the complete story, and that's because someone up there at that time at the helm or connected in any manner with the story did not want the complete truth to really come out. So all those aspects really become relevant, pertinent and open now with this comment that has been made by Roop Kumar, who's identified as someone who was part of the post-mortem team at the Cooper Hospital. Let's again listen to him, what he has said, and then come back. मैं दो चैनल को मैंने अपना टेस्ट दिया है और अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था। उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज़्यादा सब लोग आते थे और आए थे। हम लोग कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा सोच के हमें हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा तो मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये ज़रा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हज़ार बॉडी कर चुका हूँ। तो इस सब से मैं बात करने गया तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मैं। हाँ, तो मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है हैंगिंग, यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से कैसा दबा मतलब खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था, हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। Now there is a longer version of this soundbite that Roop Kumar Shah has given, where he's also saying that there were fractures on his body. He has also said that he had proposed a videography of the entire procedure, but that was declined. And we have Prakash also joining us live on this broadcast. He's joining us from Patna. In fact, a few days back, it was Prakash who had spoken to the family members of Sushant Singh Rajput. Now, with the new revelations coming in, Prakash, what would be the family's version? Because we know they are seeking a closure in the case. If you can just tell our viewers about the family's version so far. Well, a couple of months back, Sushant Singh Rajput's sister had also spoken about it. His sister Priyanka had spoken about it. Now, a week back, I spoke to his father, and he clearly stated the fact that his son cannot commit suicide. It was a murder, and the people behind it
must be investigated upon by the CBI. He did not categorically state the fact that who were the perpetrators of the crime, but he said one thing in my interview a couple of days back, that it's a clear-cut case of murder. My son cannot commit suicide, and the CBI should expedite the process. And also he welcomed the step of the investigation that has been ordered into the Disha Salyan case. And he went on to say that both the deaths can be clubbed together and there can be some corroborative evidences from this. Now, coming back to the fact that what the attendant here in the mortuary in the Cooper Hospital has stated the fact that he has attended more than 50 to 60,000 bodies, and he suspected that it was not a case of suicide but a case of murder. So he reported back to his doctor. That's what he is saying, the fact as reported by the news agency. So now it has raised doubts as a matter of fact that the investigation has been ordered into the Disha Salyan case. Will a fresh investigation be ordered by the Maharashtra government, as all the evidences as alleged by the people involved in it that had been tampered with then, and the family also says that there are enough evidences that it's not a case of suicide. Now, it's up to the investigating agencies, specifically the CBI, which is handling the case, to expedite the process, because there's not yet been any closure on this case. So it's all up to the investigating agencies as to what kind of evidence, because any decision in the court of law is based on law point. So it's all up to the police and the investigating agencies, the Maharashtra government, as well as the CBI. Since the matter is with the CBI will look into it. Back to you. In fact, Prakash, to just let our viewers know what his father said a few days back when he spoke to you, let's listen in to what Sushant Singh Rajput's father told Republic TV, how he wants a closure in the case. ये तो सही किया है, जो पहले होना चाहिए वो अभी हो रहा है। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी, यही एसआईटी निकालेगा। अच्छा किया है ये सरकार, जांच हो रहा है, ये स्वागत योग्य, ये एकदम स्वागत योग्य कदम है। और ये इसमें जो सही दोषी है वो बाहर आएगा, ये हमको उम्मीद है। तो अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी मामला पूरा तरीके से सलट नहीं पाया, जो आपके पुत्र थे, तो सीबीआई अभी जांच ही कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि उस मामले में भी जांच थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए? अब लगता है कि प्रगति होगी इस लाइन में, क्योंकि पहले सरकार दूसरी थी, इस सरकार में उसको सहूलियत होगी जांच में, और अब लगता है कि जांच सही दिशा में ही जाएगी और सही चीज निकल के आएगा सामने। परमबीर सिंह जो डीजीपी थे वो कहते थे, वो कुछ और कहते थे। उन्होंने काफ़ी परेशान भी किया हमारे एडिटर इन चीफ को, अर्नब गोस्वामी को, जब हमने आर भारत पे न्यूज़ चलाया। तो उसमें जो सरकार थी, सरकार का आदमी उसमें इन्वॉल्व था, इसलिए वो सरकार का पुलिस, वो सरकार और परमबीर जी सब झूठा बयान दिया और झूठा करार दिया था कि वो सुसाइड किया। आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो कर रहे हैं, जो एसआईटी गठित हुआ है इस केस में भी सीबीआई जांच करे तो उम्मीद जगेगी। उसमें तो सीबीआई है ही है। अभी तक आपको क्या लगता है, आपके बेटे के मौत का जो हुआ है या जो हत्या हुई है, आप जो कह रहे हैं, उसमें आपको न्याय मिला है या नहीं मिला है, या न्याय की मांग कर रहे हैं? न्याय की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देरी से आप हतोत्साह हो रहे हैं? और ये तो होना ही है, और कोई भी पिता इसी परिस्थिति में आ जाता है। आखिरी बार कब बात हुई थी आपको सुशांत से? हम लोग पहली बार बातचीत कर रहे हैं। सुशांत से हमको 14 तारीख को ऐसा हुआ था, हमको 7 तारीख को बात हुई थी, उसी महीने की 7 तारीख को, 7 जून 2020 को। बातचीत में ऐसा कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ बोला भी नहीं। वो यही बोला था कि हम पापा केरल जा रहे हैं, वो क्या कौन खेती होता है, उस ऑर्गेनिक खेती के संबंध में हम जा रहे हैं केरला, करीब 1 सप्ताह 2 सप्ताह रहेंगे, इतनी बात हुई थी।
तो जो आदमी इस तरह की बात करे वो सुसाइड कैसे करेगा, क्यों करेगा? एक दिन पहले 13 जून को अपने नई फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए किसी डायरेक्टर से भी बातचीत कर रहे थे मोबाइल कॉल में। हाँ, ये सब भी होगा, लेकिन जो आदमी इस तरह करेगा वो सुसाइड कैसे करेगा, ये कोई समझने की बात है। तो पूरी दुनिया एम्स, पूरा महाराष्ट्र पुलिस ये करार दिया कि वो तो सुसाइड था, सब लोग कह दिए सुसाइड था। सरकार की बात पुलिस बोलती थी, जो सरकार बोलता था वही पुलिस वहाँ की बोलती थी, और सरकार के जो घर के आदमी थे, जो चीफ मिनिस्टर था उद्धव ठाकरे जी, उसका बेटा आदित्य ठाकरे जी, इन लोगों का लगता है कि इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। अब जब वहाँ के लोग बोलते हैं तो हमको बोलने में क्या दिक्कत है? वो उन्हीं लोगों के बात से तो सुन के ये बात बोल रहे हैं कि उन लोगों का ही है हाथ इसमें, तो वहाँ की पुलिस कैसे बोलेगी? सरकार जो बोलता था वो पुलिस बोलती थी। अब जो सरकार अभी है, मांग करते हैं कि सीबीआई अपने जांच की गति और तेज बढ़ाए, थोड़ा सीबीआई सुशांत के केस को आगे बढ़ाए, तेजी से बढ़ाए, और दिशा कल्याण का भी केस सीबीआई डील करे तो पूरा चीज बाहर आ जाएगा। दोनों का डेथ इंटरलिंक है। हाँ, दोनों केस इंटरलिंक है। आपकी दिशा सालियान से कभी भेंट हुई थी या बात? तो भेंट नहीं हुई थी, हम इतने जानते थे कि वो उसकी मैनेजर थी। हाँ। कुछ दिन पहले उसके बाद सुशांत का भी डेथ हो गया, तो दोनों आपको लगता है कि 8 तारीख को दिशा सल्यान का हुआ था, 14 तारीख इसका हुआ था। कनेक्शन इसमें ये है कि उसका जो मर्डर हुआ था, मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है, तो शायद सुशांत बोला था कि हम इसको पब्लिकली आवाज उठाएंगे, इसके लिए हो सकता है। And that was Sushant Singh Rajput's father demanding closure after 2.5 years of Sushant Singh Rajput's death. We are keeping a close track on the developments as far as Sushant Singh Rajput's death probe is concerned, with the mortuary attendant now speaking out. He's making some very big claims, saying there were injury marks on Sushant Singh Rajput's body. We're heading into a short break right now. We will get you more updates on this after this quick break. एक दिन मैं सोते सोते गिर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है किसने किया? घोस्ट ने। मेरा दोस्त है, वो हर बार मुझे बचा लेता है। घोस्ट को कैसे पता मैं अंधेरे से डरता हूँ? घोस्ट मेरा दोस्त है, मिलोगे? अरे कोई घोस्ट नहीं, रोनी के पापा ही हैं जो उसे सेफ रखते हैं, जैसे हैवेल्स लाइफ शील्ड वायर्स, जो दिखते नहीं पर घर को सेफ रखते हैं, ना आग पकड़े ना जहरीली गैस छोड़े, वायर्स दैट डोंट कैच फायर। Everyone looks at the world today. At Hyundai, we go beyond with experiences that take us forward. Innovations that are intuitive. At Hyundai, we are going beyond mobility, and you are welcome to join us. Reimagineering brighter futures with smarter steels. Uncontrolled diabetes can lead to long-term complications and damage your heart, eyes, kidney and nerves if remains untreated. With Beau's Diabetes Care Program, get online doctor consultation, all your prescribed medicines and a dietitian consultation. Get a free glucometer and expert advice with Beau's Diabetes Care Program. Give a missed call on 740 1100. अब जियो मार्ट के ग्रैंड फिनाले सेल में होम एंड किचन एसेंशियल्स पर मिलेगा अप टू 80% ऑफ। तो साल जैसा भी गया हो, एंडिंग तो जबरदस्त होगी। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief.
We're getting breaking news right now. Court has remanded ex-ICICI Bank CEO Chanda Kochhar, her husband Deepak Kochhar and Videocon Group founder Venugopal Doot in CBI custody till December 28th. This is in connection with the Videocon loan fraud. In fact, this morning, Venugopal Doot was arrested by the CBI in this multi-crore scandal, the biggest corporate scandal in India. Chanda Kochhar and her husband, who were arrested earlier this week, have now been further remanded to custody till December 28th. Venugopal Doot, founder of Videocon Group, is also in CBI custody till December 28th. In fact, earlier when we were getting details of the hearing, the arguments in the case, we know that the CBI wanted to confront all the three accused together. Alisha is joining us with more details on the court proceedings that took place. Alisha, what was the case made out by the CBI in the court? Well, that was a clear, information that has been given by Central Bureau of Investigation over the money laundering case, and specifically the CBI, which has registered the case back then in 2019. Case back then in 2019 against Kochhar and Venugopal Doot over the irregularities, and that is something has been put forward. CBI has also mentioned that there are many of the evidences of their transaction that has come across, after which they need to be confronted. All three need to be confronted with each other. We even know that Venugopal Doot, who is an approver in the ED case, but in this case where earlier where Chanda Kochhar and Deepak Kochhar, who were arrested, and during their interrogation when they were in CBI custody, more of the information that has also been come across before the CBI. And today at around 10:30 a.m. where Venugopal Doot was arrested while he was summoned earlier as well, but there was no cooperation whether from Chanda Kochhar, Deepak Kochhar or Venugopal Doot, which is what has been mentioned by CBI in the court. After considering the seriousness of the matter, because it was around 64 crore that has been diverted to a company that is Nuclear Renewable Private Limited, on which Deepak Kochhar stands at least 50% of the stake, and he was those money that was taken loan from the ICICI, which has actually made a huge loss to the bank. And now all this information and the evidence that has been transpired before the CBI, after which there was an arrest that was made, and all three today has been sent to CBI custody till 28th December. Thank you very much, Alisha, for joining us with the details. As far as the Videocon loan fraud is concerned, what we're telling our viewers right now is that Chanda Kochhar and her husband Deepak Kochhar has been remanded to CBI custody till December 28th. Videocon founder Venugopal Doot too will be in CBI custody till December 28th. And we're also getting more details of what happened in court. Alisha continues to be live with us as far as this entire investigation is concerned. Alisha, if you can also tell our viewers about the case that the CBI is making out in this particular case, in this ICICI loan fraud case. In fact, I think we've lost the connection with Alisha. We'll try to get her back. But what we can say is that CBI in the court has said that the CBI has enough evidence against the accused, that is Chanda Kochhar, Deepak Kochhar and Venugopal Doot, for which we need their custody to confront them all together. So the next course of action, course of investigation for the central agency would be to confront and to possibly a joint interrogation of the three accused. The CBI has also said that there is a case diary which shows the seriousness of the offence. When CBI was talking about Section 17A, CBI saying they registered the preliminary inquiry in 2017 as so this is the entire Videocon ICICI loan fraud case. Just to give our viewers a sense of what this fraud is, it's a case about a 3,000 crore loan that was given by ICICI to Videocon Group from the period from 2010 to 2012, in the period of 2 years when Chanda Kochhar was at the helm of ICICI Bank. This is when the loan was sanctioned to Videocon Group that was headed by Venugopal Doot. CBI has found that there are certain irregularities in the loan that was given, and the CBI has also accused Chanda Kochhar of misusing her position as far as this case is concerned.
Now, we know that the preliminary inquiry in this case was possibly launched in somewhere in 2018. Chanda Kochar, her husband Deepak Kochar are now in CBI custody. They were arrested over the weekend. And also, Venugopal Dutt, the founder of a Videocon group, was arrested this morning. They've been remanded to CBI custody till December 28th. Possibly, there will be a joint interrogation of all the three accused. What the CBI has also said is that there is a political angle, there is a political link, which is also being investigated in the ICICI Videocon loan fraud case. Giving our viewers a quick check of the headlines at this hour. Tunisha's mother claims Sheezan was in relationship with other women. He cheated and tortured Tunisha. Police sources reveal that just 15 minutes before the alleged suicide, Tunisha had lunch with Sheezan at 3 p.m. Kochars and Videocon founder Venugopal Dutt are in CBI custody till December 28th. Congress commemorates Jinnah in a tweet as he remembers his speech from 1947 where he says Jinnah excluded the word Islam. औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते। वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। Prime Minister Modi makes big statement, mentions how Aurangzeb tried to forcefully convert Sahibzadis, but they didn't give in. And Prime Minister Modi's another big statement where he has called for rewriting of history. The show's called This Is Exclusive. I'm Deepthi Sachdeva. We begin this edition of the news with a complete spotlight on the SSR case. Now, you must be wondering, why are we talking about this case all of a sudden? This is because of an important development in the case and a reaction that has come in from someone who actually saw late Sushant Singh Rajput's body. He's spoken up. He's spoken up and he's detailing what he saw. He believes this was not a case of suicide. He says, I saw some marks. I saw some injury marks on his neck, even otherwise. And he says in his career spanning 28 plus long years, he's never seen anything like this. So is this another truth now emerging in the SSR case? We'll also cut across to our reporters and team of guests joining us live in just a bit. But first up, this is the mortuary attendant who's spoken to Republic. Listen very, very carefully to every word he says about the SSR case. अभी मैं दो चैनल को मैंने अपना टेस्ट दिया है और अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था। उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज़्यादा सब लोग आते थे। हम लोग कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा सोच के हमें हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा
तो मतलब देखा, मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये ज़रा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हज़ार बॉडी कर चुका हूँ। तो इस सब से मैं बात करने गया तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मैं। हाँ, तो मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद, ये जो गले का मार्किंग जो रहता है हैंगिंग, यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से कैसा दबा मतलब खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। इस घटना को 2.5 साल हो गए हैं और इतने सालों में आपने कुछ नहीं कहा कभी। बहुत सारी राजनीति हुई इसको लेकर के, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया था इस मामले को लेकर के, तब आप चुप थे। जी, उसके बाद भी आप देखे क्लाइमेट कैसा हो गया था, कितने लोगों की मतलब सुसाइड हो गए, मर्डर, मतलब सुसाइड के माध्यम मतलब मैं अभी वो बात नहीं बोल सकता। अभी क्या है वो मेरे को भी मालूम नहीं है। अगर खुद की जान की किसको प्यारी है तो खुद की रहती है, दूसरे की रहती है क्या? वो मेरी खुद की जान की प्यारी है तो मैं कुछ वो हिसाब से मैं बात नहीं किया। जान की प्यारी बात आप कह रहे हैं, इसका क्या मतलब? आपको अपनी जान का भय लगता है? भय तो सबको है सर। अगर आप उस जगह से अगर आप हट के बात करने लगे तो बात गलत है ना, उनके हिसाब से गलत है, अपने हिसाब से गलत नहीं कर सकते। उसमें कुछ भी हो सकता है। अभी आपके सामने 3-4 तो आप देख चुके हैं, हो चुका है। तो क्या ये डर था जिसके चलते आप चुप थे तकरीबन 2.5 साल? जी हाँ, उसी वक्त से मैं डर था, क्योंकि अभी मेरा रिटायरमेंट भी नजदीक आया था। अभी ये मैं अकेला नहीं बात कर सकता था। अकेला अभी इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी जो पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए, उसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। सरकार बदली है इसलिए आपकी हिम्मत बढ़ी, हम कह सकते हैं? जी हाँ सर, सरकार इसलिए बदली कि जो अभी बात चालू है वो बात के हिसाब से उसको न्याय मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है। उनका भी वही कहना है, वही हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। पर जो डर आपका था, सरकार बदली है लेकिन लोग तो आज भी हैं वो, तो क्या आपको अब डर नहीं लग रहा? हाँ, ये सिस्टम जो है वो सिस्टम के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे अभी भी डर लग रहा है। So that is a mortuary attendant speaking up. He's breaking his silence and he says, what I saw many years ago, he said this did not look like a suicide. Now clearly remember there are a lot of loose ends in the case that still have to be tied. Now Republic has been at the forefront of the entire investigation. You will recall, in fact, we spoke to the late actor's father just about 48 hours ago, and this is the moment when the Disha Salyan case has also been reopened by the Maharashtra government, and he says, he reiterates that he believes that there is justice that still needs to be done in the entire case. And this is him in conversation with our colleague Prakash, talking of why he believes that there has been absolutely no justice and only a cover-up in the entire case. नहीं तो सही किया है, जो पहले होना चाहिए वो अभी हो रहा है। कहीं ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी, यही एसआईटी निकालेगा। अच्छा किया है ये सरकार, जांच हो रहा है, ये स्वागत योग, ये एकदम स्वागत योग कदम है। और ये इसमें जो सही दोषी है वो बाहर आएगा, ये हमको उम्मीद है। तो अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी मामला पूरा तरीके से सलट नहीं पाया, जो आपके पुत्र थे, तो सीबीआई अभी जांच ही कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि उस मामले में भी जांच थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए? अब लगता है कि प्रगति होगी इस लाइन में, क्योंकि पहले सरकार दूसरी थी, इस सरकार में उसको सहूलियत होगी जांच में। और अब लगता है कि जांच सही दिशा में ही जाएगी और सही चीज निकल के आएगा सामने। परमबीर सिंह जो डीजीपी थे वो कहते थे, वो कुछ और कहते थे। उन्होंने काफ़ी परेशान भी किया हमारे एडिटर इन चीफ को, अर्नब गोस्वामी को, जब हमने आर भारत पे न्यूज़ चलाया। तो नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है। अब देखिए, अब जो भी होगा वो सही होगा। अब जो भी होगा वो अच्छा होगा। क्या आपको लगता है कि
उसमें जो सरकार थी, सरकार का आदमी उसमें इन्वॉल्व था, इसलिए वो सरकार का पुलिस, वो सरकार और परमवीर जी सब झूठा बयान दिया और झूठा करार दिया था कि वो सुसाइड किया। आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो कर रहे हैं, जो एसआईटी गठित हुआ है इस केस में भी सीबीआई जांच करे तो उम्मीद जगेगी। उसमें तो सीबीआई है ही है। अभी तक आपको क्या लगता है आपके बेटे के मौत का जो हुआ है या जो हत्या हुई है, आप जो कह रहे हैं उसमें आपको न्याय मिला है या नहीं मिला है, या न्याय की मांग कर रहे हैं? न्याय की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देरी से आप हतोत्साह हो रहे हैं? और ये तो होना ही है, और कोई भी पिता इसी परिस्थिति में आ जाता है। आखिरी बार कब बात हुई थी आपको सुशांत से? हम लोग पहली बार बातचीत कर रहे हैं। सुशांत से हमको ऐसा हुआ था, हमको 7 तारीख को बात हुई थी, उसी महीने की 7 तारीख को। So you heard the father there. The father says he believes that there has been a cover-up in the case. He says someone has been lying on the case. Let's quickly say good evening to our panel of guests. I also do see our colleague Prakash, who managed that big scoop for us, along with Alisha, who's tracking the story also from Mumbai, Swapnil Kothari, and also Nilotpal Mrinal, who's a political analyst. Good evening to both of you, gentlemen. And before I come to you, I have to go to Prakash. Prakash, this many would say is an extremely important statement in the entire case. A case that many people do not want to talk about right now, Prakash, but a case that has not reached its logical end. Now, have we heard absolutely anything from the father of the late actor ever since you've got us that reaction from the mortuary attendant? Well, Dipti, not only this father's reaction, but I've been at the forefront of this entire investigation 2.5 years back, and the entire nitty-gritties, details, bank account, all the CDRs, I have been a witness to it. More than 5,000 pages I have gone through in this entire case, and it looks murky. But as far as father of SSR is concerned, he categorically said that it's murder, not a suicide. My son cannot commit suicide. Now, after one of the attendants from the mortuary in the Cooper Hospital making a strong statement, I don't know for what reason he was silent for the past 2.5 years, but it's been a strong statement. He said that he had attended to more than 50,000 to 60,000 bodies in his career, and it looks like it looked like a murder, not a suicide, and he had disclosed this to his superior officers in the Cooper Hospital. Now, coming back to the investigation, the CBI has not yet come to the closure of this case. The family, specifically the father of SSR, is demanding that the CBI should expedite the investigation, and all the evidences should be corroborated. The pieces should be clubbed together, and as far as Disha Salian and SSR's case is concerned, it should be interlinked, and the corroborative evidence should be dealt with carefully so that it could come out that it was not a murder, and it was a murder and not suicide by his son SSR. Back to you. Okay, Prakash, that's an important bit of information that you're sharing with us. And before I go to Alisha, I want to take a quick question with Swapnil. Now, you know, Swapnil, the question that can be asked is that why did this mortuary attendant take so long to speak up? But today that he has spoken up, I'm not sure whether you've heard his testimony where he's clearly saying that this looked very unusual. I saw a few injury marks and people, you know, were wanting to hush up. Videography was not allowed, Swapnil. How important is this statement legally in the case today? Well, Deepthi, I heard his entire statement, and his discomfiture and fear was still palpable. There was no question that he was sounding a little afraid, even possibly even after his retirement. And he hinted at a lot of things which, you know, people who are aware of this case knew that, you know, there have been several disappearances of several people. So, you know, even before and after the case. So obviously he was a little scared. And legally, obviously, any testimony that points in the direction, especially of someone who's been 40 years looking at some 60,000 bodies, obviously he knows whether this person, whoever the body before him is a result of a suicide or result of a murder. So his entire testimony was pointing towards the fact that it was a clear-cut murder.
Now, as far as the Disha Salian's case opening is concerned, Deepthi, I was one of the first at that time, at about 2.5 years ago, to tell that there is a definite linkage between Disha Salian's death and Sushant's death. So obviously now that this issue of Disha Salian's disappearance or mysterious death has been raised in public circles, obviously I hope that the SIT is formed and it tries to go ahead with the case, and it's not just a political gimmick of sorts, and it just does not get refrigerated after a certain point in time, the way the CBI investigation into this SSR case has been refrigerated. The good thing about the CBI investigation is that still they haven't come out with a conclusion that it is a suicide. So they've kept themselves mum. And it would be ridiculous on their part to even come after 3 years and say that, yes, by the way, it is suicide, because it doesn't take too long for any investigating agency to come to a conclusion that it is suicide. Only when you have a conclusion, only when you have several evidences pointing towards... You know, Swapnil, only for want of time, I want to come in here because I want to get in Nilotpal and then also our colleagues, Alisha, who've been tracking the story. Nilotpal ji, to you now. See, many people have not been talking about the case. They believe that case has gone in a cold storage. So let's not talk about it. Let the CBI do whatever. And, with passing time, the case will close. But tell me something, sir. Do you believe that there has been a cover-up in the case? Do you believe that people purposely do not want to talk about the case and the reality here? See, as far as I know about SSR family, what my belief was there 2.5 years ago also. He was from a very solid family, and he will never take this kind of a step. He will never take this kind of, a step. Okay, all right. You're not saying much, Nilotpal ji, but I think the case today is standing at a very, very important juncture. Let's understand from Alisha also, who tracks this case for us closely. Alisha, any word yet from the investigators who have worked on the case or from your sources? Where does the investigation today stand? And this testimony that's just come in from the mortuary's attendant is extremely telling. If he as a person says that, listen, I've seen some marks, people did not want that to be videographed, there is obviously suspicion. Why would anyone not want to do that? Well, Dipti, as far as the investigation is concerned, we know that Central Bureau Investigation has already issued a statement back then, and also mentioned that the investigation is still underway, and there could be the people who will be asked to appear in this case whenever necessary. But yes, looking at the statement, the testimony of a mortuary attendant is really very crucial and explosive, because what has been mentioned that it was back then when he was present on 14th on 15th June when the body of Sushant Singh Rajput was brought for the post-mortem. What he witnessed, the witness that he clearly mentioned that there are the force that was applied. Not only this, but there are marks on his body, on his neck, and what we see when a person is committing suicide is something very apart from the what he has been witnessed, and he also informed about it to his senior, but the doctors has asked him to keep quiet. And right after 2.5 years, when he is now appearing and being making this testimony, is something very huge, and also the part of investigation. And I'm definitely sure that Central Bureau of Investigation, where they are looking into the matter, and still the investigation is underway, they're definitely going to look over the testimony that has been given by the mortuary attendant, which making a very explosive information, clearly mentioning he has been working since 28 years, but the body what he has witnessed while for the post-mortem that has been brought in the hospital, that was Cooper Hospital, and what he witnessed that it is not something a case of suicide but a case of murder as per his testimony. So we'll see what is the investigation agency is going to look into this, and in what way now the case will go through, because we know that in Disha Salian case there were many of the information that has come forward, but yes, the new evidence that has come across, and the Maharashtra government has made it very clear it will be special investigation team which will be formed with the new evidence that has been emerged, because now the case is with here when it comes to the Sushant Singh case where CBI has been investigating, and this is something of very important testimony where the CBI will look into it. Absolutely, Alisha. No doubt it's a very, very important statement. You cannot ignore it. And I will actually give the last word to you, Swapnil. So please bear with me for a few more minutes, because I want to get in quickly Prakash and Nilotpal ji also.
Nilotpal ji, when you hear this kind of a testimony that has come in today from a mortuary attendant, what is your very first response? Why do you believe people did not want to talk about those injury marks that he alleges he saw? Why was a videography of this entire sequence also not allowed? It was a botch-up done that time also. Since last 2.5 years, we all believe and we all know that there is something which SSR cannot done, that everyone is mentioning suicide. He is from a very well-to-do family, and now the testimony this gentleman is giving, it's a very responsible thing coming from a government employee, because if he's from a hospital, he's coming after 2.5 years when he knows if something can be concluded from an agency, from due to this testimony, everything will go back to 302, which everyone is demanding since last 2.5 years. Okay. Now, this gentleman thing is, mortuary guy statement is very important, and I think CBI should record his statement, connect this with whatever happened, and come to the conclusion agency cannot take a case for 5 years, 10 years, already 2.5 years. And SSR family, parents, his sisters, family, his fans, all want to know what happened to him. So it's a high time that agency also come forward, visit Mumbai, take the record from this guy and conclude it. They cannot take 10 years, 12 years, 15 years to give justice to anyone. If SSR will not get justice, how a common man in India will get justice? It's not a matter of only SSR case. It's a matter of Absolutely. I think, Nilotpal ji, you hit the nail on the head. You cannot wait forever for justice. And I have to give the last word to Swapnil. Swapnil, you've seen the entire case unfolding over the last 2.5 years. You've seen a good amount of politics also that's played on it. But, sticking purely on investigation, what do you believe should the CBI or can the CBI do in the light of this new statement that has just come out? Well, Deepthi, to be very honest, I think CBI has got enough evidences to point to the direction of Section 302 and even go ahead with the full trial. But I don't know why it is keeping quiet. Perhaps your guess is as good as mine. Now, this particular evidence that has been given by this mortuary attendant is something, an additional, flavor to the case as such. It's, let me tell you, legally, if there are 6 people in a court of law who say that Swapnil Kothari was on the Republic show at 6:30 p.m. with Deepthi Sachdeva, you don't need 6 people to say that. 2 people are enough. So this person, if at all, maybe the 4th or the 5th person in the line of evidences before a court to say that yes, this was a murder because of the marks that have been shown, because there were others also which Republic had brought at that time to point in that direction. So this is only an additional part. So this is something which now lies with the CBI, the Central Bureau of Investigation. So as not to keep this case refrigerated at all. You come out one way or the other. Whatever your difficulties are, whatever your problems are, whatever your reservations are, you have to come out one way or the other. So if you come out one way or the other, at least people would know, and the courts would know, and the family would know that where do they stand and what do they need to do thereafter. If you come for Section 302, then nothing needs to be further. Everything will go ahead in trial. But if you come out with something like a suicide, then people will know what to do. I mean, you go to a court of law and ask to reopen the case on the basis of substantial evidence. Everyone should know. Based on the evidence, Swapnil, you make a fair point that people now should know what happened in the case. If this case was a suicide or not, who was behind this, were there motivations involved, and does this have an element of a cover-up like many people are alleging? Only for want of time, but I'm thanking our team of Prakash, Alicia, who've been tracking the story right from day one. Thank you to both of you for putting in all that effort on the story. Thank you also to Swapnil, to Nilotpal ji for speaking to us. And do remember, Republic has not forgotten the SSR case. Republic will continue to be on top of that story. We are quickly heading into a break right now. Back on the other side with lots more. Powered by ArcelorMittal, Nippon Steel India Limited. Smarter steels, brighter futures. Mr. Blanc, you're the world's greatest detective, right? In your words, there has been a murder. The killer wouldn't hesitate to kill again if it covers their tracks. Wow! Well, I'm out of here. Yeah, me too. Lock the doors.
Stay in your rooms. Everyone is in danger. Are you calling me dangerous? Well, we'll see. ये सामने फ्यूल पंप है, वहां से ले लें। जी सर फ्यूल तो पिछले पंप में भी मिल जाता, इंडियन ऑयल में ऐसा क्या है? कुछ है स्पेशल, खुद ही देख लेना। स्पेशल? अरे इंडियन ऑयल की तो बात ही कुछ और है। जरा देखिए, फ्यूल तो बराबर डाल रहे हैं। अरे यहाँ कंप्लीट ऑटोमेशन है, मतलब प्योर और पूरा दोनों ही। इन सेंट्रली मॉनिटर्ड मशीन्स की एक एक रीडिंग का हिसाब है यहाँ पर। क्या हुआ? सर बिल। हाँ बिल हो गया। वाह सर। याद है ना, इंडियन ऑयल की बात ही कुछ और है। इंडियन ऑयल, पहले इंडियन फिर ऑयल। India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharti Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अभी मैं दो चैनल को मैंने अपना टेस्ट दिया है, और अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था। उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज़्यादा सब लोग आते थे और आए थे। हम लोग कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा सोच के हम हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा Amity faculty have filed over 1,700 patents. Yet another reason why Amity has been conferred with the National Intellectual Property Award by Government of India for being the top Indian academic institution for patents and commercialization. आपकी किचन और बाथरूम्स को चाहिए MYK लेटिक्रीट SP100 टाइल जॉइंट का ऑलराउंडर। MYK लेटिक्रीट SP100 जोड़ हो तो ऐसा। क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं।
एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. All right. Well, good evening, friends. It's been a newsy start to the news week this Monday. And let's begin with the headlines at 6:30 p.m. live and breaking. Vadra Congress at it again after Savarkar now insults Bharat Ratna Vajpayee. No apology, no action from Congress yet. Congress eulogizes Jinnah, commemorates his speech from 1947. Mortuary attendant in SSR case makes explosive comments. Spotlight back on Sushant Singh Rajput case. Coachers and Videocon found a Dhoot in 3-day CBI custody in connection with the loan fraud case. और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते। वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। Prime Minister Modi makes big statement, mentions how Aurangzeb tried forced conversions, but Sahibzadehs did not give in. All right, welcome friends. On the 98th birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee, Vadra Congress has insulted the former Prime Minister of the country and a Bharat Ratna. But on the same day, the Vadra Congress leader Pawan Khera remembered Jinnah. He tweeted, and I quote, "Incidentally, today happens to be the birthday of Muhammad Ali Jinnah. His speech of 11th of August 1947 to the Pakistan Constituent Assembly did not mention the word Islam even once. His speech has forever been a subject of debate among historians and analysts. A very strange and opportunistic omission of the word Islam in this important speech by a man who fought for a separate nation on religious lines." But what is important is that Pawan Khera, on realizing that this might start a controversy, got another tweet as an afterthought after almost half an hour, suggesting that Jinnah was being opportunistic. But what is important is that why, on the one hand, we have someone like a Gaurav Pandey of the Congress insulting Vajpayee, of course deleting the tweet later, and then Pawan Khera, who's in charge of the media and communications department of the Congress party, coming out with this Jinnah tweet. So between the Jinnah tweet and the Vajpayee tweet, is the Congress party presenting a picture of their politics, which is of appeasement and attacking someone like a Vajpayee. A very personal attack there on Vajpayee, suggesting that he was not participating or did not participate in the Quit India movement. That's a standard Congress attack that we have seen coming in on the BJP and the RSS. Of course, the BJP was not there at the time in its earlier avatar as Jan Sangh. And we have some reactions coming in from the BJP to the Congress party's tweet. Let's listen into some of them. कांग्रेस के दोहरे मापदंड जो है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जुड़े हुए एक गौरव पांडी जी हैं, उनके बयान देखिए, अटल जी पे अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा उनकी समाधि पे और वहां पर फूल चढ़ाऊंगा या कुछ ऐसे करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ गाली देती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें जाकर वहां पर इज्जत से जाना। तो ये दोहरे मापदंड नहीं है तो और क्या है? देखिए, इसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अब इसे कहते हैं कि अज्ञानता में हीरो और ज्ञान में ज़ीरो। अब दिक्कत इनकी ये है कि कभी अर्थव्यवस्था के ये अर्थशास्त्री बन जाएंगे, कभी जो है वो हमारे सुरक्षा नीति पर जो है वो सुरक्षा के विशेषज्ञ बन जाएंगे।
तो कभी विदेश नीति पर बन जाएंगे। तो इस तरह का जो इनका अज्ञानता भरा हुआ बेवकूफ़ी है वो हर दिन सामने आती है। लेकिन उनको एक बात समझ लेना चाहिए, ये देश मजबूत हाथों में है, महफूज हाथों में है। कोई भी जो है वो दुनिया की ताकत इस देश के सम्मान, इस देश के स्वाभिमान और इस देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मोदी जी के रहते हुए इन्हें भी इस बात का एहसास है। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, खड़गे जी हों, सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी, इनको बताना होगा कि एक तरफ तो आप नाटक करते हैं, आप श्रद्धांजलि देने सदैव अटल पर जाते हैं, दूसरी तरफ आप ही के नेता ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। यह दिखाता है कि अंदर से कितना जहर है और ऊपर से क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक कद ऐसा है, उनकी विचारधारा इतनी अटल और अडिग है कि उसको आपको सम्मान देना होगा। तो इस मजबूरी में राहुल गांधी वहां जाते हैं। Okay, BJP, they're responding to the Congress tweet on Atal Bihari Vajpayee. Of course, Congress did not come out with any explanation, but then the BJP really suggesting that the Congress party has lost its mooring and making a very personal attack on a former Prime Minister who was given Bharat Ratna as well. Vajpayee, of course, was inclusivist, had acceptability across the political spectrum, a proof of which was Rahul Gandhi visiting Atal Bihari Vajpayee Samadhi earlier in the day. But then, of course, the Congress party not in line. Rest of the Congress party not in line with that. On that note, we will take a short break. On the other side, mortuary attendant in SSR case makes explosive claims. Spotlight back on Sushant Singh Rajput case. औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते। वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। Amrita School of Business. Admissions open. Ladies and gentlemen, you expected the puzzle, but for a long person, this is not a game. Explain it to us, detective. Everyone is in danger. All right, when's the murder mystery start? India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amritkal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharti Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. Yeah, Ajay, look at your dad. Will we be the same at his age? Absolutely yes, if we plan our future like him. How? My father had invested in LIC's Jeevan Akshay, which gives immediate and guaranteed annuity at regular intervals, that too for life. Wow. But do we have to wait until his age? Absolutely not. We recently invested in LIC's new Jeevan Shanti, which gives deferred annuity, which means regular income after some years. I see. LIC. LIC's annuity plans give 10 annuity options and flexibility in receiving regular income. LIC, हर पल आपके साथ. It is important to keep your HbA1c in the target range of 6.5 to 7% to avoid complications. With Beto's Diabetes Care Program, get online doctor consultation, all your prescribed medicines and a dietitian consultation. Get a free glucometer and expert advice with Beto's Diabetes Care Program. Give a missed call on 740 1100. Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. Shahrukh ने बताया. Wait up. Booking a car service. From here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं. There's so much more.
जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. Security forces have busted a major terror hideout of terror group Lashkar-e-Toiba in the Khandara top area of the Basantgarh in the Udhampur district. This hideout had a 15 kilogram of IED that was kept here to carry out a major terror strike. Along with the 15 kg IED, the security forces have also recovered 5 detonators, 500 grams of RDX, 7 rounds of AK-47 and other arms and ammunition, and also 1 matrix paper and a letterhead of the terror outfit Lashkar-e-Toiba. Important to mention that a couple of months back, ahead of the visit of Union Home Minister Amit Shah to Jammu and Kashmir, similar kind of IED attacks were carried out by Lashkar-e-Toiba, and the IEDs, the sticky bombs, were brought in from the Basantgarh, wherein it was kept with a terrorist who was radicalized and reactivated by the terror cadres of Lashkar. All right, Tunisha's mother claims Sheezan was in relationship with other women, cheated and tortured Tunisha. Police sources revealed just 15 minutes before the alleged suicide, Tunisha had lunch with Sheezan at 3 p.m. Amity faculty have filed over 1,700 patents. Yet another reason why Amity has been conferred with the National Intellectual Property Award by Government of India for being the top Indian academic institution for patents and commercialization. सामने फ्यूल पंप है, वहां से ले लें। जी सर, फ्यूल तो पिछले पंप में भी मिल जाता। इंडियन ऑयल में ऐसा क्या है? कुछ है स्पेशल, खुद ही देख लेना। स्पेशल? अरे इंडियन ऑयल की तो बात ही कुछ और है। जरा देखें, फ्यूल तो बराबर डाल रहे हैं ना। अरे यहाँ कंप्लीट ऑटोमेशन है, मतलब प्योर और पूरा दोनों ही। इन सेंट्रली मॉनिटर्ड मशीन्स की एक-एक रीडिंग का हिसाब है यहाँ पर। वाह सर। याद है ना? इंडियन ऑयल की बात ही कुछ और है। इंडियन ऑयल, पहले इंडियन, फिर ऑयल। Uncontrolled diabetes can lead to long-term complications and damage your heart, eyes, kidney and nerves if remains untreated. With Beau's Diabetes Care program, get online doctor consultation, all your prescribed medicines and a dietitian consultation. Get a free glucometer and expert advice with Beau's Diabetes Care program. Give a missed call on 740 1100. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा-थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Reimagineering brighter futures with smarter steels. All right, welcome back, friends. We have some more details of what exactly happened
between the morning when Tunisha left home very happy, and then at around 3:30 p.m. when reports came that she had committed suicide. In between, according to her mother, she had a meal with Sheezan and everything was good in one conversation that she had with her mother. So what really happened in those few minutes between the lunch that the couple had and the suicide that led to that situation? Now, according to police, Tunisha had happily left her home and reached the set where the incident has happened. Sheezan and Tunisha, in fact, had lunch together in the makeup room at around 3 p.m. after the first shift shoot was over. Police investigating the matter and essentially looking at what really happened during this time. Did the two pick up a fight? That Tunisha committed suicide at 3:15 p.m. All over in just about 15 minutes. Police have sent both Tunisha and Sheezan's mobile phones to forensic lab to retrieve calls and chats between them and find out what happened after 15 days of breakup that Tunisha committed suicide. According to the police, Tunisha's mother has told in a statement that 6 months ago, Tunisha was very happy about the relationship with Sheezan. She had also told this to him, but she was under tremendous stress after Sheezan broke up with her 15 days ago. According to the mother's statement, Sheezan is responsible for this. And she has gone on to add that when Tunisha was discharged from the hospital, the doctor had advised the family to take special care of her and keep her away from any kind of stress. All right, let's listen into what the mother had to say. आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीज़ान ने टुनीशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने टुनीशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी टुनीशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीज़ान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है, बस बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। All right, mother of Tunisha there trying to bring to attention certain aspects of what happened between the two. In fact, Republic gets you an exclusive phone-in interview of TV actress Tunisha Sharma's mother. Let's listen into what she had to say to us. मैं केवल एक ही लाइन जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कितने दुख की घड़ी है आपके लिए, आपकी क्या सोच है मैडम इस विषय को लेकर के? आपने अपनी बेटी को खोया है, आपको लगता है कि बेटी को तो हाँ जी बोलो। आपको लगता है शीज़ान को सज़ा मिलनी चाहिए? क्या आप जानती थी उसको? हाँ, शीज़ान को सज़ा मिलनी चाहिए, ये तो मैं बोलूँगी पक्का, क्योंकि शीज़ान के साथ उसका रिलेशनशिप था, उसने ब्रेकअप किया, उसका पहले किसी लड़की के साथ था, उसने इसको बताया कि मैं उस लड़की को प्यार करता हूँ और मेरा तेरे साथ कुछ नहीं है, ऐसा चला है। उसने ऐसा बोला इसको, और ये ठीक नहीं है ना। तुम किसी फिर इन्वॉल्व क्यों किया तुमने टुनीशा को? वो बच्ची थी, तू 2.5 साल का है, वो बच्ची है छोटी, मैं इन्वॉल्वमेंट क्यों की उसकी? शीज़ान को तो सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो बच्चा गया, मेरा तो सब कुछ चला गया जी। हाँ जी, लेकिन बाकी आप बात कीजिए, मुझसे बात नहीं हो रही अच्छी अभी। साथियों, इतनी कम उम्र में साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे, लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी? 2 निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में
जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यही किसी भी राष्ट्र के समर्थ युवा का सामर्थ्य होता है। Well, as India marks Veer Bal Divas to commemorate the martyrdom of Sahibzades, the two sons of Guru Gobind Singh, Prime Minister Modi attended and made address on the occasion. Let's listen in. बच्चों का उत्साह, बच्चों के अंदर एक उमंग का भाव और बच्चों के अंदर एक गर्व की अनुभूति कि मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष की उम्र में जिन साहिबजादों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उस बलिदान को ये आत्मसात करें, उन मूल्यों को, और राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करें, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। और इसीलिए हमारे धर्म के प्रतीक, हमारे पताकाएं भी इनके हाथों में है और हमारे राष्ट्र का गौरव, हमारा तिरंगा ध्वज भी इन बालक बालिकाओं के हाथ में है, जो बड़े उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ और इस अवसर का साक्षी बनने में अपने आप को जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये सभी बालक बालिकाएं अभिभूत हैं इस बात के लिए कि आज उन्हें इस मार्च पास्ट में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं श्रद्धा सत्कार भाव के साथ उन्हें यहां से रवाना कर रहे हैं। Amrita School of Business. Admissions open. छक्का नहीं, टूटा। आपके टाइल्स को चाहिए MYK लेटिक्री टाइल एडेसिव। फॉर्मूला ऐसा कि अब टाइल न टूटेगा न छूटेगा। एक दिन मैं सोते सोते गिर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है किसने किया? घोस्ट ने। वो हर बार मुझे बचा लेता है। मिलोगे? अरे कोई घोस्ट नहीं, रोनी के पापा ही हैं जो उसे सेफ रखते हैं। जैसे हैवेल्स लाइफ शील्ड वायर्स जो दिखते नहीं पर घर को सेफ रखते हैं, ना आग पकड़े न जहरीली गैस छोड़े, वायर्स दैट डोंट कैच फायर। India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया. Wait up. Booking a car service. From here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं। There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया। It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. अब जियो मार्ट की ग्रैंड फिनाले सेल में फूड और ग्रोसरीज पे मिलेगा अप टू 50% ऑफ। तो साल जैसा भी गया हो, एंडिंग तो जबरदस्त होगी। It is important to keep your HbA1c in the target range of 6.5 to 7% to avoid complications. With Beau's Diabetes Care Program, get online doctor consultation, all your prescribed medicines and a dietitian consultation. Get a free glucometer and expert advice with Beau's Diabetes Care Program. Give a missed call on 740 1100.
आपके भाई के ऊपर जो आरोप लगे, आप किसी ने क्या मैम ये बताइए, आपके भाई के ऊपर जो आरोप लगे उसके लिए कुछ बताइए। क्या कहेंगी मैम, कुछ कहेंगी? आपके भाई के ऊपर जिस तरह का आरोप है सुसाइड का, एलिगेशंस लगे हैं, आप क्या बात कहना चाहोगे? व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? ये बताइए, आपके भाई के ऊपर जो आरोप लगे उसके लिए कुछ बताइए। क्या कहेंगी मैम, कुछ कहेंगी? Multiple blasts reported in Pakistan's Balochistan, at least 5 killed, several injured in the blast. Kurdish activists, left-wing politicians and anti-racism groups demonstrated on Saturday in Paris after 3 people were killed. A very good evening and thank you for staying with us on Republic. I'm Deepthi Sachdeva. The show's called The Biggest Story Tonight and we are putting a spotlight on the Congress party. Is the Congress party now willing to even eulogize Muhammad Ali Jinnah? Why do they glorify that man? And how has the Congress party today defended that kind of a reaction? It's a huge political controversy. Let's quickly get kick-started. First up, the headlines on top of 7. Vadra Congress is at it again after Savarkar now insulting Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee. No apology, there is no action from the Congress party yet. The Congress party eulogizing Muhammad Ali Jinnah, commemorating his speech from 1947. Mortuary attendant in the SSR case is making an explosive claim. The spotlight is back on the Sushant Singh Rajput case tonight. Tunisha's death mystery unravels. Mother alleges Sheezan cheated on Tunisha, also harassed her. Coaches and the Videocon founder Dhoot now in a 3-day CBI custody in connection with the big loan fraud case. So why really today is the Congress party talking about Muhammad Ali Jinnah? Are there any political, indications to what the Congress party says, what the Congress party does, or the Congress party simply does not have any ideology? Remember, time and again, this is a question that has been raised with no responses from the Congress party at all. He is the man responsible for dividing the country way back in 1947. Today you have senior Congress leader Pawan Khera who actually eulogizes Muhammad Ali Jinnah, and as I said, there is no apology, no clarification at all. That's coming from the Congress party. The BJP instead has hit right back, and the BJP says, why is the Congress party even doing this? What does Rahul Gandhi have to say about it? ये डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का, और इन सारी इश्यूज़ को, सारे डायलॉग्स को एक जगह मिलाते हैं तो ये लगता है कि राहुल गांधी भी कभी कभी अपनी मानसिकता को, कांग्रेस की मानसिकता को छुपाने के लिए कुछ नया इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग बता देते हैं कि राहुल जी जो कर रहे हैं वो नाटक है। रियल क्या है? रियल वो कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट है, चाहे वो उनकी पार्टी की कोई महिला नेत्री हो या पुरुष नेता हो। आप सोचिए, अटल जी के जन्मदिन पे, भारत रत्न अटल जी के जन्मदिन पे, जिनका 5 साल कांग्रेस के 55 साल पे भारी पड़ जाएगा, उस दिन आप जिन्ना को याद करना चाहते हैं? याद करिए, देश देख रहा है। और जो
दूसरे लोग हैं, उनकी जो एक महिला नेत्री है, उसका ट्वीट भले ही उन्होंने डिलीट कर दिया हो, लेकिन छुपाने से कांग्रेस की मानसिकता नहीं छुप सकती। तब लगता है कि जो राहुल गांधी का अटल जी को लेकर के बयान है वो मात्र दिखावा है, छलावा है। ये समझते हैं ऐसे छल करके हम लोगों की मानसिकता अपनी तरफ ला देंगे। हिंदुस्तान जवाब देगा, समय आने पे जवाब देगा। सर, जो कौरव पंदी है उन्होंने तो अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, बट जो पवन खेरा ने जिन्ना जी को याद करते हुए ट्वीट किया था, उसके बाद ठीक 1 घंटे बाद उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि ऐसे व्यक्ति को हमको याद नहीं करना चाहिए। तो क्या ये एक फेस सेवर अटेम्प्ट बोल सकते हैं कि वो ये दिखाने के लिए कि नहीं हम जिन्ना को सपोर्ट नहीं करते हैं, 1 घंटे बाद उसी थ्रेड में वही अलग ट्वीट करते हैं? चूँकि इन्हीं सब बातों से लगता है, देखिए 2 ही बात हो सकती है, या तो राहुल गांधी दिखावा कर रहे हैं या तो राहुल गांधी को उनके पार्टी के नेता नहीं मान रहे हैं। ये दोनों कांग्रेस का मुद्दा है। लेकिन जो अटल जी का अपमान करेगा, जो देश का अपमान करेगा, देश की सेना का अपमान करेगा, उसको ये देश समय आने पे ऐसा जवाब देगा कि उसके आगे सभी बौने दिखेंगे। जिस कांग्रेस पार्टी के नेता चीन और पाकिस्तान के तारीफों के पुल बांधते हों, उनकी ताकत की बात करते हों, हमें उनसे कम किसी स्टेट्समैन, देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर देश को पोखरण विस्फोट करके दुनिया भर की नजरों में मजबूत खड़ा करने का काम किसी ने किया था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। दुनिया ने भारत का लोहा उस समय से मानना शुरू कर दिया था। भारत के बारे में दुनिया का नजरिया उस समय से बदला था और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। आज भारत का मान सम्मान दुनिया भर में बड़ा है। कांग्रेस के सर्टिफिकेट की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं। देश की जनता ने 2014-2019 में रिकॉर्ड मतों से, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बनाया है। कांग्रेस पार्टी लोग इसी प्रकार की बयानबाजी करके लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। वो जिन्ना जिन्होंने भारत माता को टुकड़े करने का काम किया, ऐसे लोगों के प्रति कांग्रेस पार्टी का सद्भाव प्रारंभ काल से रहा। देखिए, इनका सबका संस्कार ऐसा है। मैं कल देख रहा था श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट भी और श्री अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हैं, भारत रत्न महामना मालवीय जी भारत रत्न हैं और उनको जन्मदिन पर एक ट्वीट करने की भी ज़रूरत नहीं महसूस किए। और किस प्रकार से कल का दिन बीता, इनके ट्वीट करने से जो महापुरुष हैं उनके कद में घटोतरी और बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन इनके जो संस्कार हैं उसका संदेश जाता है। किस प्रकार से बाबूजी कल्याण सिंह जी का निधन हुआ था, श्री अखिलेश यादव जी यहीं लखनऊ में रहते हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं गए थे, यह उनका संस्कार है। और मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमारे वैचारिक रूप से विरोध में रहते थे, लेकिन देश के रक्षा मंत्री थे, उनका दुखद निधन हुआ। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जो उनको अंतिम विदा देने के लिए नहीं गया हो। तो भाजपा के संस्कार में, सपा बसपा कांग्रेस के संस्कार में यही अंतर है। I do not know in what context he has said all this, but it was L.K. Advani Saab, former Deputy Prime Minister and Home Minister of the country, who had visited Pakistan and who gave a very specific statement. Jinnah was a very secular person. He was a great leader. And later on, you go through the book written by Jaswant Singh Ji, Foreign Minister of Atalji's government. He has also written in his book that Jinnah was very secular man, very great man, a very respectable person. So that is a reaction that you've just heard from Congress's Rashid Alvi, clearly not disturbed with the kind of questions that this story, remember, raises. What really is the compulsion of the Congress party that they're eulogizing a man called Muhammad Ali Jinnah, who was responsible for the partition of the country? And till now, why have we heard absolutely nothing from the Congress party? Look at the first question that goes up on our screens. Is the Congress eulogizing Muhammad Ali Jinnah? The answer is an obvious yes, but why?
Why is the Congress party doing this? What kind of a political ideology is this? This brings us to our second question. Is there an attempt now to give a secular color to Jinnah? And that will mean that there is an ideology, there is a game plan that the Congress is working towards by trying to give secular colors to Muhammad Ali Jinnah. Why is the Congress commemorating Jinnah's birthday even? What do they have to do with him? Someone who's divided the country, someone who's responsible for partition. Why today is the Congress party even wanting to commemorate his birthday? Is the Congress then trying to emphasize that Jinnah was secular? A question that we have seen that's played up again and again. Do remember, these are extremely important questions as far as the politics, the ideology of the Congress party is concerned. Will the Congress party really respond to them? This also brings us to our next question. Eulogize Jinnah and personal insult for Vajpayee sahab. Now, those of you who are wondering how did the Vajpayee comparison come in here, do remember earlier today, Rahul Gandhi was at the Samadhi of the late Prime Minister. But just a day earlier, that is in the last 24 hours, you had another Congress leader. His name is Gaurav Pandey. He is associated with the office of the Congress president. He actually has gone ahead to call Atal Bihari Vajpayee Saab a British informer. So much of backlash, so much of politics that ensued, he deletes that tweet, but that's about it. The reason why we say, what is the context of this tweet that has come in on Jinnah? So you praise Muhammad Ali Jinnah, but you insult Atal Bihari Vajpayee. Is that the kind of politics that the Congress party now is wanting to play? And let's push that entire point a little further. This is about Atal Bihari Vajpayee Sahab. Like I said, the 25th of December is his birth anniversary. Rahul Gandhi yesterday said that he's going to be visiting his Samadhi. He's done that earlier today. But like I said, on the other hand, you have a Congress leader who insults him, who insults the Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee. Why does he do that? He deletes his tweet, but that's about it. The BJP has hit right back. The BJP says Rahul Gandhi needs to respond. Rahul Gandhi needs to apologize and sack this man who's working in the office of Mallikarjun Kharge, the Congress president. आकड़ जो है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जुड़े हुए एक गौरव पांधी जी हैं, उनके बयान देखिए, अटल जी पे अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा उनकी समाधि पे और वहां पर फूल चढ़ाऊंगा या कुछ ऐसे करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ गाली देती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें जाकर वहां पर इज्जत से जाना। तो ये दोहरे मापदंड नहीं है तो और क्या है? देखिए, इसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अब इसे कहते हैं कि अज्ञानता में हीरो और ज्ञान में जीरो। अब दिक्कत इनकी ये है कि कभी अर्थव्यवस्था के ये अर्थशास्त्री बन जाएंगे, कभी जो है वो हमारे सुरक्षा नीति पर जो है वो सुरक्षा के विशेषज्ञ बन जाएंगे, तो कभी विदेश नीति पर बन जाएंगे। तो इस तरह का जो इनका अज्ञानता भरा हुआ बेवकूफ़ी है वो हर दिन सामने आती है। लेकिन उनको एक बात समझ लेना चाहिए, ये देश मजबूत हाथों में है, महफूज हाथों में है। कोई भी जो है वो दुनिया की ताकत इस देश के सम्मान, इस देश के स्वाभिमान और इस देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मोदी जी के रहते हुए इन्हें भी इस बात का एहसास है। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, खड़गे जी हों, सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी, इनको बताना होगा कि एक तरफ तो आप नाटक करते हैं, आप श्रद्धांजलि देने सदैव अटल पर जाते हैं, दूसरी तरफ आप ही के नेता ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। यह दिखाता है कि अंदर से कितना जहर है और ऊपर से क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक कद ऐसा है, उनकी विचारधारा इतनी अटल और अडिग है कि उसको आपको सम्मान देना होगा। तो इस मजबूरी में राहुल गांधी वहां जाते हैं। So those are the reactions that, remember, have come in so far from the Congress party.
who continue to say that there is nothing to explain or clarify in the entire story. But on your screen, look very closely at this graphic that is explaining to you why we believe this is a doublespeak of the Congress party, where Rahul Gandhi earlier has paid tributes to the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, but his close aide is insulting Atal Bihari Vajpayee exactly on his birth anniversary. So why this contradiction? And which is the true stand of the Congress party? Is the Congress party not guilty of playing politics then on the legacy of the former Prime Minister, someone who's decorated, someone who's done tremendous work for the country? So should Rahul Gandhi not clarify on what this man that you see on your screens, Gaurav Pandey, earlier said? He, remember, works very, very closely with Mallikarjun Kharge, who's the Congress president, and he actually said that Atal Bihari Vajpayee worked as a British informer. He played an important role, he said, in inciting the mob. And in spite of these insults that have been heaped, the Congress party continues to be silent. And from that big political controversy to the other story that has dominated headlines. This is about a life gone too soon. She was all of 20, but she allegedly commits suicide. This is the actress Tunisha Sharma, who's no more. But the story, ladies and gentlemen, today has evolved into a number of angles. Now, was she pressurized to commit suicide? Is there any foul play in the entire case? Why does the mother, when she breaks her silence today, believes that something was amiss in the relationship between Sheezan and Tunisha, and she says this is the reason why Sheezan must be probed thoroughly? Let's quickly first up listen in to what the mother said. मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीज़ान ने टुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने टुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी टुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीज़ान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है, बस बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। मैं केवल एक ही लाइन जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कितने दुख की घड़ी है आपके लिए, आपकी क्या सोच है मैडम इस विषय को लेकर के? आपने अपनी बेटी को खोया है, आपको लगता है कि को तो हाँ जी बोलो। आपको लगता है शीज़ान को सज़ा मिलनी चाहिए? क्या आप जानती थी उसको? हाँ, शीज़ान को सज़ा मिलनी चाहिए, ये तो मैं बोलूँगी पक्का, क्योंकि शीज़ान के साथ उसका रिलेशनशिप था, उसने ब्रेकअप किया, उसका पहले किसी लड़की के साथ था, उसने इसको बताया कि मैं उस लड़की को प्यार करता हूँ और मेरा तेरे साथ कुछ नहीं है, ऐसा चला है। उसने ऐसा बोला इसको, और ये ठीक नहीं है ना। तुम किसी फिर इन्वॉल्व क्यों किया तुमने टुनिशा को? वो बच्ची थी, तू 28 साल का है, वो बच्ची है छोटी, मैं इन्वॉल्वमेंट क्यों की उसकी? शीज़ान को तो सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो बच्चा गया, मेरा तो सब कुछ चला गया जी। हाँ जी, लेकिन तुनिशा आप बात कीजिए, मुझसे बात नहीं हो रही है अच्छी अभी। And breaking news is just coming in. It's a tweet, in fact, that has just come in from the Twitter handle of the Ukrainian president. He says he had a phone call with the Prime Minister Narendra Modi, wished a successful G20 presidency. He says it was on this platform that he announced the peace formula, and now he says, I count on India's participation in its implementation. He also goes on to say that he thanks for humanitarian aid and support in the UN. This is essentially for Prime Minister Modi, that Volodymyr Zelensky has actually put out this tweet. Abhishek has more details. Abhishek, is there any more detail that you have on the broader contours of that phone call that happened between Zelensky and the Prime Minister?
Well, as of now, the information is coming through this tweet made by President Zelensky of Ukraine, Deepti, in which, as I quote from the screen, it says, I had a phone call with PM Narendra Modi and wished a successful G20 presidency. It was on this platform that I announced the peace formula, and now I count on India's participation in its implementation. I also thank for humanitarian aid and support in the EU. I think what President Zelensky is indicating is that he's trying to prevail upon India to press upon Russians, given that we are G20 president now and it's an important body, to do something about the war. It's becoming unsustainable so far as the Ukrainians are concerned, because remember, it's the peak of winters now, and the situation insofar as fuel supplies, energy supplies, and food security are concerned, Ukraine is in a very difficult situation. So obviously, everyone would want that the war ends because it's leading to human misery. Deepti and President Zelensky, a little indirectly, but essentially asking India to prevail upon the Russians so that the war can stop. We are as yet awaiting an official statement from the Indian side, from the Ministry of External Affairs, but it is clear, we know, Deepti, that Prime Minister at every opportunity, from the UN to the G20 to SCO summit, has very publicly demonstrated India's commitment towards peace and has wanted that both sides should be talking. It's not an era for war, and in fact, Prime Minister has been very publicly, welcomed and commented upon globally for his remarks on the ongoing Europe war. But what is important is that President Zelensky now almost requesting that Prime Minister prevail upon the Russians a little more using the platform of G20. We are, as I said, there would be a readout from the Indian Ministry of External Affairs as well. At the moment we get it, we'll bring viewers up to date with that as well. All right, Abhishek, for the moment, thank you. And with this, we are heading to a very quick break right now on the show, but don't go anywhere, because when we come back, we will put our spotlight back on the Tunisha Sharma case. Whether she committed suicide or there is more to this case, what do the investigators feel, and what has the mother said so far? All that and much more when we come back. Powered by at Hyundai, we are going beyond mobility. LIC, हर पल आपके साथ. Amity faculty have filed over 1,700 patents. Yet another reason why Amity has been conferred with the National Intellectual Property Award by Government of India for being the top Indian academic institution for patents and commercialization. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। For how long will you continue being tensed about the future? Pension can free you from future's tension. With LIC's new Pension Plus, make your own pension plan, because this plan creates market-linked wealth for your future. Moreover, this plan comes with guaranteed additions and also offers various options for receiving pension, so that you grow young and tension-free. LIC, हर पल आपके साथ. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में?
भैया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Welcome back. You're watching the biggest story tonight, and now on this edition, we are putting our focus back on the Tunisha case. She, remember, has allegedly committed suicide, but there are many now in the industry, in the family, who believe that this is not a suicide. She was possibly pushed to take this extreme step. Now, what is the truth behind everything that has happened, and why do the investigators believe that the last 15 minutes of her life possibly could hold the key to what really has happened? Now, look very closely at this entire graphic detail that's going up on your screens, right from 3 p.m. till 3:15 p.m. because these are the 15 minutes at the end of which she goes into the makeup room, an adjoining washroom, and she commits suicide. But in these 15 minutes, what did she do? She has a lunch with Zishan. Many say that Zishan was actually asking her to go and have food because she was not eating properly. Now, what is the truth behind that claim, and what is the conversation that actually panned out in those 15 minutes that made her take this extreme step? Let's take that question to our colleague Alisha, who's also joining us live right now. Alisha, 15 minutes. In 15 minutes, can any person decide to end his or her life? You know, that is bizarre to say the least. If she was all right, she was putting out an Instagram post, she's having lunch with a co-star, and then in the next 15 minutes, she just walks in and commits suicide? Dipti, that is something a part of investigation, and specifically a major role where the police has been investigating over this 15 minutes. Because yes, it was 3 p.m. where Sheezan and Tunisha Sharma was having a lunch together in the makeup room, and right after Jishan left from the same place, it was just a fraction of like 15 minutes where Tunisha decided to commit suicide. It's an extreme step that has been taken, and of course the statement that has been recorded before the police, we know that it's almost 14 people's statement that has been recorded by police, and most important testimony of her mother. Mother has clearly mentioned that she was very much depressed. She was under very tremendous stress from the last 15 days since the time Sheezan decided to break up with her, and even Tunisha was taken to the doctor, where the doctor advised that she should be taken more care about it and she should not go against the stress. But now the crucial part is of an investigation over that 15 minutes, and specifically the police has been continuously looking into this investigation. For the moment, we've cut across to these live images coming in. That is Chanda Kochar, I think, along with her husband Deepak Kochar, that you see there on your screens. Do remember, the case is moving very, very fast. It's a significant case now that is turning out to be the biggest banking fraud. That for you is Chanda Kochar sitting there in that car. She, remember, now is under the complete radar of the investigative agencies, who believe that she possibly is not the only kingpin of the entire case of fraud. You see her there now. More images on your screens. We can go back to Alisha, who's also tracking that story. So, you know, Alisha, we do see Deepak Kochar, Chanda Kochar, also Mr. Dhoot. All of them now have to stay in the custody of the investigative agency. But what are your sources within the agency telling you? How were they acting? You know, were they acting alone? Or there is obviously a political link to this? Were there kingpins possibly involved?
Well, Dipti, it's an investigation part which has been conducted by Central Bureau of Investigation, and when Chanda Kochhar, Deepak Kochhar and Venugopal Dutt, who is being produced before the special CBI court, they have mentioned very important points, specifically over the irregularities which has been happened on behest of Chanda Kochhar, and also the loans that was diverted to Videocon group, and moreover there was 64 crores from 3,275 crore, where the 64 crores was also diverted to a company from where Deepak Kochhar was holding a stake of 50%. So this is something has been put forward. We know the Chanda Kochhar and Deepak Kochhar, who were arrested 3 days back by the Central Bureau of Investigation, and today where Venugopal Dutt has been arrested at around 10:30 a.m. in the morning, and all the three were present before the court. They were produced before the court, and specifically CBI has mentioned that all three need to be confronted, after which they seek the custody of all the three. And we know that looking at the seriousness of the case, where the special CBI court has granted 3 days custody of Chanda Kochhar, Deepak Kochhar and Venugopal Dutt to CBI till 20th of December. All right, I don't think we've heard the last word yet, Alisha, on that big story. And like I said, it possibly is the biggest banking fraud that we have seen in a long, long time. Trust Republic, ladies and gentlemen, to keep you on top of that investigative story with our entire team. I thank Alisha right now for getting us those live updates as we quickly head into a break right now. But there is lots more lined up when we come back, so don't go anywhere. Powered by at Hyundai, we are going beyond mobility. LIC, हर पल आपके साथ. ऑलराउंडर हम भी हैं. और तुम्हारा किचन? कभी स्टेन्स, कभी जर्म्स, तो कभी पानी. आपके किचन और बाथरूम्स को चाहिए MYK लेटिक्रीट SP100, टाइल जॉइंट का ऑलराउंडर. MYK लेटिक्रीट SP100, जोड़ हो तो ऐसे. Reimagineering brighter futures with smarter steels. ArcelorMittal, Nippon Steel India. Smarter steels, brighter futures. You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है. समझा देते हैं. प्यार से समझाएंगे. ये तो अपनी जुबान है. जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए. विमल बोलो जुबान केसरी. Uncontrolled diabetes can lead to long-term complications and damage your heart, eyes, kidney and nerves if remains untreated. With Beau's Diabetes Care Program, get online doctor consultation, all your prescribed medicines and a dietitian consultation. Get a free glucometer and expert advice with Beau's Diabetes Care Program. Give a missed call on 740 1100. Two days after actor Tunisha Sharma allegedly committed suicide on the sets of a TV series, police sources say that Tunisha and accused Sheezan had lunch together at 3 p.m. on the day of the death, and at 3:15 p.m. she allegedly committed suicide. The focus of the investigation is now on the 15 minutes before her death.
Tunisha's mother has said that Tunisha was shattered after her breakup with Sheezan. She also said that Sheezan cheated her and used her before dumping her. आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीज़ान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीज़ान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है, बस बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। Sheezan's family has released a statement. They have said, "We have full faith in the Indian judiciary system and Sheezan is cooperating with the Mumbai police through all the procedures. We will talk about this when the time is right." Police sources reveal that more suspects are under the scanner. They say that Sheezan's secret girlfriend will also be interrogated in connection with Tunisha's death. Tunisha and Sheezan's phones are in police custody. Their WhatsApp chats and call records will be analysed and investigated by the Vajpayee police.